you will understand that message and crux questions are on the easier side and assumptions are trickier, right? These are the questions which you should attempt. These are very easy. यूनिट डिजिट का यूज किया, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने कुछ कैलकुलेट किया ही नहीं, स्क्वायर वेयर क्या है, आई डायरेक्टली यूज द यूनिट डिजिट एंड टोल्ड यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन C65. सपोज ये आ गया, इसके बाद द कंडीशन हैज टू स्टार्ट. कंडीशन क्या, टी पे है तो टी से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इफ समवन इज टेलिंग हाफ ट्रूथ हाफ फॉल्स, राइट? तो वी कांट सॉल्व सच क्वेश्चंस, कैन नॉट बी कंक्लूडेड अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज वी डोंट नो इफ वन पर्सन इज टेलिंग द ट्रूथ, 2% is telling the truth, or all the person are telling the truth, or who is telling the lie. Hello everyone, welcome to PW OnlyIAS. I hope all of you are doing great and your preparation is going well. So today we will be discussing the last paper of this series, PYQ discussions, right? So today we will solve the paper for the most recent year, 2025. Okay. So similar to 2023, there were very good questions from Quant in 2025 also. And one more important thing happened in 2025. The number of questions from 21 to 24 in reading comprehensions was same, 27 each year. In 25, those increased to 29. Okay, so importance of reading comprehension increased more. So we'll solve the questions because the paper is new and all of you will be looking for the solution. So we will be solving the paper from question number 1 to 80 in series. Okay, 1, 2, 3 and so on. So as rest of the papers also, I would recommend ke print this paper, solve along with me, and then once you have attempted the question, then only see the solution, right? So we'll start with the paper. The paper overall was on the difficult side. If you will see ke previous, compared to the previous year papers, right? 2011 में the paper started for CSAT. So अभी तक there are couple of papers which are of good quality. So one was 23 and this 25 again was a good paper. Okay, so let's start with it. So we'll go from question number 1 to 80, right? So let's start with the first question. So if you see, the first question is this: maintaining an ecosystem just to convert biodiversity will affect its commercial potential as well as the livelihoods dependent on ecosystem. Okay, so commercial potential as well as livelihood dependent on the ecosystem. There is also a conflict between using an ecosystem only for livelihood, for commercial exploitation, or strictly for conservation. Deforestation caused due to commercial exploitation will lead to indirect harm like floods, siltation problems and microclimatic instability, apart from adversely affecting livelihoods dependent on forest. These conflicts are particularly acute in developing countries where the dependence of the people on the ecosystem is significant and the commercial exploitation has the potential to boost national income. Because we want both things, sustainability भी चाहिए, commercial exploitation भी चाहिए, and there are lots of people dependent on, तो वहाँ पे problems are. So which one of the following best reflect the critical message? Now if you, before going to the question, if you see the pattern of reading comprehension, what they have done is, every time they are giving you 12 to 13 passages in the paper, and on each of these questions, first question is between message and crux, which are on the easier side if you have done reading comprehension properly, or there are videos available. Praram YouTube पे भी होंगे, English वाले पे भी होंगे. Last time revision video was also there, reading comprehension के ऊपर. So if you have seen those, you will understand that message and crux questions are on the easier side and assumptions are trickier, right? So every passage is linked to two questions. First one is message and crux and second one is assumption. So the strategy should be that first you should attempt all the message and crux question mostly, because those are easy, basically dependent on the passage, directly आ जाते हैं answer. Assumptions में which questions you find easier, attempt those and leave the questions which you find to be difficult, right? So here the question is, what is the message conveyed? So conservation of biodiversity is not an issue to be worried about. If this is not about when some people depend on ecosystem. Now they are not saying that conservation of biodiversity is not an issue. ठीक है? There is a conflict between के आपको growth भी चाहिए and there are people who are dependent on it. So the conflict is highlighted. They are not saying that it is not an issue. So it is beyond the scope of the passage. We don't know. Commercial exploitation of forest goes against the fundamental right of the people dependent on forest for food and shelter. ठीक है? Now here also not relevant to our passage. Sustenance of livelihood and degradation of ecosystem while being together exacerbate one another, leading to conflicts and
imbalances. This is the main idea of the passage, title of the passage. Commercial exploitation of ecosystem should be completely stopped. Now there has to be some balance. They are not saying to stop it completely. So the best possible option is option C. Understood? So this is the first question. The second question here is that with reference to the above passage, the following assumptions have been made. No country needs to depend on ecosystem to boost national income. There is no dependence of country. Developing countries का आपको example दिया. This is incorrect. Resource rich countries need to share their resources. Now, resource rich countries need to share their resources. ठीक है, ये वैसे आपको ठीक लगता है. Assumptions के question में first you need to ascertain that this is somehow connected to the passage or not. Now the information whether a resource rich country should provide resources to the developing countries or not, this is not discussed at all, right? So most probably this should not be the assumption as well, right? तो यहाँ पे both option 1 and 2 are in, neither 1 nor 2. Understood? Assumption question में whenever you are trying to check a statement, first ascertain if it is somehow somewhere connected with the passage or not. After that, to check a assumption question, if you have seen the videos I have made on reading comprehension, you will understand that you can make a positive and a negative statement. Which one of the following is supporting the passage, that you should take, है ना? But here resource rich countries should do what we are not bothered with, और है ना passage में भी कुछ दिया नहीं है, so we will not select this option. Okay, let's go to the next option, next passage actually. The history of renewable energy suggests that there is a steep learning curve, meaning that as more is produced, cost falls rapidly because of economics of scale and learning by doing. The firm's green innovation is path dependent. The more a firm does, the more it is likely to do in the future. Okay, the strongest evidence for this is the collapse of the price of solar energy, which became about 90% cheap during 2010s. So much cheaper. Repeatedly beating forecast. Moving early and gradually gives economies more time to adjust, allowing them to reap the benefits of part-dependent green investment without much disruption. A late, more chaotic transition is costlier. So part-dependent जो भी चीज़ है उस पे if you start early, there are advantages. Okay, if you beat the curve and reduce the prices earlier. Okay, so based on this, which of the following, first question is this, question number 3, which of the following statement best reflect the central idea? Central idea is crux basically. Economies of scale is essential for transition to green growth. Now if you read what was the passage के जो पहले स्टार्ट करता है उसको फायदा हो सकता है if technology advances quicker than anticipated, है ना? तो उसके तरह का कुछ central idea you need to find out. So economies of scale is essential. Essential is extreme, right? This is essential for transition to green growth, not necessarily. Modern technological progress is intensively linked to part dependent innovation. Extreme statements can't be your answers. Moderate, search for moderate answers which are linked to your passage. वही best options है. Countries with large economies are in a better position to adopt green technology. Now countries with large economies, they have not talked about, especially these are the countries which can take benefit out of it, right? So हटाओ इसको भी. Timing plays a crucial role. Basically this was the important point discussed in the passage, that timing plays an important role whether you will take benefit out of the technological advancement or not, right? So this is the best possible central idea of the passage. Also this is not extreme, moderate statement which aligns with the information in the passage. Understood? Chalo next. Which of the following are the assumptions? Path dependent green investment will eventually most likely benefit growth. Most likely, possibility, okay, benefit growth as well as public finance in a country like India. होगा कैसे? दोनों बोला है ना. अगर आप you see this passage, ठीक है, reap the benefits part dependent green without much disruption. Second, if other green technologies follow the same pattern as that of solar, there will most likely be a easy green transition. If it happens, right? Correct है. अगर दूसरे भी करते हैं तो सही है. So done. We can take both as the possible assumptions to write this passage. Okay, so answer for question number 4 is option C, right? चले आगे. Now quant के questions were good. ठीक है, quant के questions were good in this paper. So let's see the first question from quant.
A natural number n is such that it can be expressed as p plus q plus r, where p, q, r are distinct factors of n. Distinct factors of n. How many numbers below 50 have this property? Now, prime numbers के there are two factors, so three factors तो minimum possible चाहिए, तो 4 है, 4 के factors are 1, 2 and 4. 1 plus 2 plus 4 is 7, तो 4 तो होगा नहीं, 5 नहीं है, 6 try करो. So you will find that for 6, you will find that for 6 the factors, there are three factors, 1, 2 and 3. There are three factors which gives the sum as 6. फिर आप 7 is a prime number. 8 के लिए करोगे तो you can't make 8. 2 4 है, 1 है, 9 नहीं. So next number you will fall at is 12. You will find that 2 plus 4 plus 6. These are the three factors of 12. Not all the factors, only three factors जरूरी नहीं है. Any three factors of that number should combine and form this number. So 12 आता है. Next you will find 18, 3, 6, 9. Next you will find 24. And similarly 24 के बाद you will find 30. फिर 36, then 42 and 48. You will find this 4, 5, 6, 7 and 8. 12, 10, 15, 12, 18, 14 and 21, 16 and 24. These are the factors of these numbers by adding which you can get the number itself. So less than 50, below 50 there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 numbers. 8 such numbers for which the number can be framed by adding the factors of the number. Understood? So यहाँ पे question number 5 का answer is option C. Option C is that there are 8 such numbers below 50. Okay. Now question number 6. Now here everyone is saying the answer is 4 and I think the answer is more than 6. दोनों हो सकता है. It depends. कैसे? 3 prime numbers p, q, r each less than 20. There are 3 prime numbers p, q, r each less than 20 such that p minus q is equals to q minus r. They have not told you that p, q are distinct. If they take p, q, r as distinct, p, q are non-distinct. Okay, from this you can find out that 2 of q is equals to p plus r. ठीक है. So possible value, how many possible values can we get for each less than 20? तो अगर p non distinct है तो p q r अगर same हो गया तो this holds true every time, है ना, because q p plus q is equals to 2q. तो for this अगर ये होएगा तो if this, suppose I can take p equals to q equals to r equals to 2, 3, फिर prime numbers है ना, 5, 7, ठीक है, 11, 13, 17, 19. So this will give you more than 6 if non-distinct. लेकिन अगर distinct लोगे तो the answer is different. ठीक है, distinct लोगे तो there are only 4. ठीक है, क्या कैसे कैसे क्या चाहिए आपको? Twice of q equals to p plus r. All these prime numbers are lesser than. So 2 और 3 का 5 तो नहीं हो सकता. ठीक है, 3 और 5, 3 और 7 हो गया. ठीक है, तो 2 into 5 equals to 3 plus 7 ये हो सकता है. ठीक है, 2 into 7 14. 14 आप देख लो किसी से हो सकता है. 11 plus 3 हो सकता है. 3 plus 11 2 into 7 हो सकता है. These are, और क्या हो सकता है आप ऐसे सोचते जाओ. तो 22 और कैसे बन सकता है? So 2 into 11 22 करते हैं. 22 can be 3 and 19. ठीक है, 22 can also be 7 15 नहीं हो पाएगा. ठीक है, और सोचो और भी नंबर होंगे, राइट. सो ऐसे आप देखोगे तो देर आर, जैसे 2 and 5 हो गया, 3 and 7 हो गया, 2 into 7 14 हो गया. सो 2 into 2 4 नहीं बना सकते. 4 के लिए 3 और 1 होगा, नहीं बना सकते. फिर
6 करो, 6 के लिए 5 and 1 हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर 5 के लिए, 10 के लिए मैंने सोचा, 10 के लिए वी कैन हैव 3 and 7। देन 10 के बाद 14 के लिए आई एम थिंकिंग 11 and 3, 5 के साथ तो नहीं हो पाएगा, 9, राइट। सो 3 and 11, फिर 7 के बाद 11 आई थॉट 22, 22 कैन बी 3 and 19, 3 के बाद 5 करूँगा तो यहाँ पे वी विल गेट, सो 2 into 11, ओके 22 कैन बी 5 and 17, 17 5 22, so there are 4, ठीक है। So let's see, according to me it should be non distinct, नहीं देते तब तक you have to take, so I think the answer should be more than 6, ठीक है, because the answer is key is not out, people are taking both, but for me, until unless they have not specified PQR are distinct prime numbers, how can you say that PQR are distinct? Anyone can take 2 2 2. If PQR all are 2 and each less than 20, then this condition is satisfied, right? So ये बहुत, I am not understanding कि how people are doing this कि PQR has to be distinct. Okay, let's see, आगे चलते हैं. So now how many possible values of PQR are there that satisfy this condition? 1 by P plus 1 by Q plus 1 by R equals to 1. So any of P and Q and R can't be 1, right? We have to start with 2. So 1 by 2. Now the rest of the number has to be 1 by 2 to make it 1. So it can be 1 by 4, 1 by 4. This can be one of the solution. One of the solutions if you see is this 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. ठीक है? This can be the solution. और क्या हो सकता है? Think कि 1 by 3 के साथ और क्या possibilities है? 1 by 3 के साथ 1 by 6 and 2 by 3 वैसे भी कर सकते हो, या 1 by 3 plus 1 by 6. मतलब think on these lines कि how can you make the sum to be 1. Okay, ये हो गया. और क्या हो सकता है? 1 by 2 के साथ यहाँ पे you can create one more, 1 by 2. Now 1 by 3 plus 1 by 6 is nothing but 1 by 2 only. 1 by 3 plus 1 by 6 is 1, 6 LCM लोगे, 2 plus 1, 1 by 2, right? So there are 1, 2 and 3 solutions to this. The easy way to solve this question is by percentage. Okay, you need to find what is 1 by 2. 1 by 2 is 50%. What is 1? 1 can always be written as 100%. Okay, so this 1 is 100%. How many different how many different percentage can you take, numerical values, for which you can make it 100%. So 33%, 33.33%, 33.33%, and this can be done 50% plus 25% plus 25%, 50% plus 17 point some percent plus 33 point some percent, right? So these are the 3 different options for which you will get the value of 1 by P plus 1 by Q plus 1 by R equals to 1. The question basically is from chapter of percentage. वहाँ पे percentage you need to know how you distribute different percent, and this is a good question actually. ठीक है, थोड़ा सा difficult पड़ेगा when you are solving this in the exam time frame, तो वहाँ पे student may find it difficult to solve this, है ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन है विच यू नीड टू अवॉइड. अगर एग्जाम में यू आर नॉट श्योर के देर आर नो अदर पॉसिबिलिटीज ऑफ आंसर्स टू दिस, राइट? सो लीव दैट क्वेश्चन, राइट? चलो आगे चलते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ यू सी, दीज आर द क्वेश्चंस विच यू शुड अटेम्प्ट. दीज आर वेरी इजी. So January से January, if you see the transition is of 0 months. Now January to December it is -1, January to October it is -2, and January to this will -3. October is 10, -3 is 7. So 7 is January, February, March, April, May, June, July, right? So this has to be July. Then -4 होगा यहाँ पे, ठीक है. Then यहाँ से -5 and यहाँ पे -6. October -6 is 10 -6 is 4. January, February, March, April. So this has to be April, right? So the sequence they are using is month use कर रहे हैं, -0, -1, -2, -3, -4 and so on. So if you see the pattern, you just have to find the months. ठीक है, तो this X has to be July, Y has to be April, July and April. The answer has to be option B. 8th का answer is option B. चलो, let's see. Team X scored a total of n runs in 20 overs. Team Y scored the score in 10% less over. ठीक है. Had the Y's average, तो अभी X का average we don't know. Average marks of X, average marks of, इसको ऐसे ले लेते हैं, whatever
x का एवरेज इंटू 20 इज इक्वल्स टू y का एवरेज इंटू 20 इंटू we have to decrease 10%, right? So 1 minus 10 by 100. How do we decrease 10%? Decrease of 10% is this only. So y ka average marks into this number of overs is same because they changed in the same. Had the average of y's run rate runs per over been 50% higher, 50% higher, the score would have been tied in 12 overs. So x average again would have been 20 is equals to when y's average is 50% more, then the number of overs they would have taken is 12, right? Abhi if you see yahan pe there is only one equation. Kya hai yahan pe? They want you to how many runs were scored by team X. Uske liye you need to find X ka average into 20, theek hai? But you can't find X ka average from this because these are equal. You will find that 1 equals to 1 aayega hamesha. You can't solve these equations. Okay, there is no other information given other than these, so you can't solve this equation and hence the answer is cannot be determined. You can try. I have made both the equations for you. You can try to solve and find the x average marks by x per over, average marks of y per over, that is x average and y average. If you find those, you can find the total marks, total score, but you can't actually. These equations you can't solve and hence we can't predict. Actually, we can't tell what was the total score scored by these people. Ratio आप निकाल लोगे, you can find the ratio of their averages, but actual average you can't find. You want one more relationship for which you can answer this question, but at the moment you don't have that relationship. ठीक है, तो वो अभी नहीं हो पाएगा. ये जो situation है इसमें you can't solve it. Okay, now next, the price. What is given? The price of a commodity is first increased by k%, then decreased by k%, then increased by k%, and then again decreased by k%. If the new price is q, then what is the relationship between p and q? देखो, आइडेंटिटी लगानी है, इक्वेशन लिखनी है. डिक्रीज इंक्रीज इन ऑर्डर कुछ भी होता है उससे फर्क पड़ता नहीं है. न्यू क्वांटिटी q इज इक्वल्स टू p quantity p into first that increase क्या होता है 1 plus k by 100, then decrease 1 minus k by 100, then increase 1 plus k by 100, then decrease 1 minus k by 100. Done. Now q, a plus b, a minus b पता है, so this will be 1 minus k square by 1000 and this is 1 minus k square by 10000. Now 100 का LCM लेके there are 2, so you can put it to the left hand side. So if you take the LCM, this will be p into, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 ना, 10 की पावर 4 माइनस k स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 10 to the power 8 हो जाएगा. So p into 10 to the power 4 minus k square का whole square is equals to q into 10 to the power 8. This is the relationship between p and q. So if you see, this relationship is given to you in option A. This relationship is given to you in option A. कुछ करना नहीं है. Increase and decrease. Suppose there are discounts and then the taxation is applied when you are trying to purchase a product. तो उसमें कुछ नहीं करना होता. You just have to multiply the percentage increase and decrease continuously and you can get to the answer. Okay? उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. Simple questions होते हैं, simple solutions होते हैं इनके. Understood? Let's go to the question number 11. Question number 11 क्या है भाई? पैसेज दिया है, पैसेज पढ़ लेते हैं. Each state in India faces a distinctive set of challenges regarding the impact of warming, but also offers its own set of opportunities. Challenges भी हैं individual and there are opportunities for reducing emission depending on its natural resource. For example, coastal states needs to take action to protect their shores from sea level rise. Districts that are drier needs to prepare for viable monsoon precipitation. Okay, Himalayan regions have their own unique challenges and selected part of peninsular India and offshore areas offer great opportunities for harnessing wind power.
These various aspects needs to be considered for developing clear. These various aspects need to be considered for developing clear and sustainable goals for the future. Okay, challenges भी हैं, opportunities भी. Which of the following statement best reflect the most logical, rational and pragmatic message? Message का मतलब क्या होता है? You need to find the title for the passage. Let's try to find a suitable title for the passage. Okay, यहाँ पे the mitigation and adaptation strategies to tackle the climate change is essential. The responsibility of state. Now essential, the responsibility is not defined यहाँ पे, है ना? India is too diverse to implement any effective strategy. Should be location based, but we can't say that there are no effective strategies. ठीक है? It is basically the responsibility, again the responsibility uniform government जरूरी नहीं है ना. India needs to formulate effective climate change mitigation and adaptation at a state regional level because each have their own advantages and disadvantages. This was given. So it was बहुत simple था. Directly, if you have read the passage properly, you can answer. Let's see what are the assumptions they are trying to test. Green energy production can be linked or integrated with the climate change mitigation and adaptation. तो यही तो पूरा passage है कि there are challenges but there are opportunities also. So while tackling the problems, you can harness the positive potentials also there, right? Effect of climate change are much more severe in coastal. Basically, कहीं पे comparison is not done. They are saying each areas have their own difficult challenges, right? So we can't select this. The option A is the correct answer here. Assumptions में. Okay. Next, if the social inequality is the most acutely felt social problem in India, insecurity more than poverty. Insecurity more than poverty is the most acutely felt economic problem. The economic problem more is insecurity according to this passage rather than poverty. Beside those below the official poverty line, even those just above the poverty line are subject to multiple economic insecurities of various kinds due to wealth and or health risk, market fluctuation, job related uncertainties. Many government policies are acutely intended toward mitigating these insecurities. ठीक है? So क्या पूछ रहा है ये देख ले. Which of the following statement best reflect the critical message? Again, the question is about message. India's political executive should be aware that poverty and social inequality and consequent sense of inequality is the main social problem. Very generic statement. Let's see. In India, poverty is the primary reason for social inequality and insecurity. Ulda. Poverty and social inequality are so intricately linked that they pose an unimaginable crisis. Crisis की बात तो नहीं है. Insecurity more than poverty is the main economic issue that government policies must address. So the passage is written to highlight this point only, that insecurity more than poverty is the main economic issue that government policies must address. This is the point the author wants to make, and that's why he has written this passage. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. People have above the poverty line also are prone to suffer from anxiety about economic insecurity. Yes, बोला है कि वो ज़्यादा ऊपर होते तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता है ना. Basically, per day, अगर you are saying urban area में 33 rupees is enough for you not to be called poor, right? तो 34 जो कमा रहा है, he is not relatively very rich, okay? वो भी poor ही है ना? Eradication of poverty can result in peace and now this is not the main point. Main point is insecurities को कैसे handle करना है. Eradication of poverty can result in peace and social inequality in country. We don't know, ठीक है? We don't know. We can't comment, right? So option 14 ka most probably the answer should be A. There are a couple of questions which are very tricky here in this reading. I will tell you, but iska answer to most probably it has to be A. Okay, there are a couple of questions jahan pe options are very tricky. Assumption ke question hote hain basically wo. We will see when they come. Okay, abhi 14 are done. Let's start with the remaining questions. Quant ke jo hain, let's see kya hai. A cube is painted yellow on all its faces. The cube is then cut into 60 smaller but equal pieces by making minimum number of cuts. A minimum number of cuts के लिए क्या होना चाहिए? The pieces on each side has to be very close. देखो 60 pieces can be made by 1 into 60. Basically, you can divide a cube into 60 equal sheets. But here number of cut are 0. -1 -1 होता है ना, 0 0 plus here the number of cuts are 59. The total number of cuts are 59. You want to make 60 pieces by making minimum number of cut.
तो मिनिमम नंबर ऑफ कट के लिए यू हैव टू मेक 60 by such that multiplying three values, matlab what are these three values? 160 number of pieces on each edge where three edges are intersecting. I can make 60 pieces by 3 into 4 into 5. This will give me minimum number of cuts to make three pieces on edges 2, 3 and 4. How many cuts are there? This is a formula of cuts, है ना? Number of cuts are, if you know the pieces, number of pieces on each edge, so you just have to subtract 1 from the number of pieces and you can get the total number of cuts you have made to make the cubes, smaller cubes. So here if you see there are 9 cuts. So the minimum number of cuts is 9, correct? Now basically how do you find the internal cubes which are painted on no face? Internal cubes are number of pieces on edge minus 2, number of pieces on other edge minus 2, number of pieces on other edge minus 2. So this is 1 into 2 into 3, which is 6. So this is also correct. So both 1 and 2 are correct. Now this is a very good question, but to solve this question you need to be very clear on cubes and dice. जो cubes and dice के ऊपर से फॉर्मूले पढ़ लेते उससे ये सॉल्व होने वाला नहीं है. You need to be sure कि number of cuts आते कैसे हैं. नंबर ऑफ कट्स आते हैं नंबर ऑफ पीसेज ऑन ईच एज उसको -1 करके. अब वो है ना, फिगर में आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन फिगर में बिना दिखाए भी आपको समझ में आना चाहिए. बिकॉज व्हेन आई टीच दिस इन क्लास आई मेक श्योर कि विदाउट डायग्राम यू शुड बी एबल टू सॉल्व दी क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन क्यूब्स एंड डाइस. हर बार का 3D डायग्राम आप बना नहीं सकते. यू कांट मेक 3D डायग्राम इन द एग्जाम. ठीक है, यू कांट थिंक ऑफ द एग्जाम में कि हाउ दिस क्यूब विल लुक लाइक, राइट? But you need to get to the answer. तो उसके there are ways. जैसे how could I directly write the number of cuts? This is how you count the number of cuts. हमेशा this will work. Every time this will work. Suppose number of pieces on 3 edges is 6 into 6 into 6. तो number of cuts are 5 plus 5 plus 5, 15 directly. Cuboid है, उसको cut किया है and the number of pieces on different edges is 2 into 3 into 4. The number of cuts are 1, 2 and 3. टोटल 6 कट्स होंगे. ठीक है. सिमिलरली दिस फॉर्मूला, कौन सा वाला? दिस हाईलाइटेड वन. दिस यू शुड नो कि हाउ डू आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीसेज विच आर हिडन. ईच एज में जितने पीसेज होते हैं -2 करना पड़ता है और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. दिस यू कैन ओनली डू व्हेन यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ क्यूब्स वाला, जहां पे होता है n-2 का क्यूब. व्हाट इज n? n इज द नंबर ऑफ पीसेज ऑन ईच एज. If you don't understand what is n in that formula, you can't use this. Understood? So cube and cuboids के अभी questions are very good in recent years. So you can't solve all the questions by formula. You need to understand how you get to these formulas. वहाँ पे on site आपको देखना पड़ेगा cutting कैसे हुई है, कौन से pieces I need to find, है ना? पहले जो questions आते हैं कि directly हाँ hidden cubes are n-2 cube, n की value is 4, put 4 minus 2 whole cube, तो 8 आ गया. You can't solve those questions now. ठीक है? You need to be very clear कि cuboid के questions, and cuboid is important. Cubes and cuboids are important. Why? Every year you can see some questions, 1 or 2 questions are there every year. Reasoning से cuboids में. Okay. So if you don't know how to calculate the number of cuts, I have just told you. है ना? What is the meaning of this 3 into 4 into 5? The 3 edges of a cube meet at one vertex, right? And these 3 edges will have, one edge will have 3 pieces, one edge will have 4 pieces, and the third edge will have 5 pieces. This is what I am talking about. The total number of pieces are, एक vertex पे there are 3 edges, वो match कर रहे हैं, touch कर रहे हैं. उन edges के जितने pieces होते हैं, you just need to multiply them and find the total number of cubes. है ना? अब इसमें I can tell you, but ये बहुत time लगेगा, इसको 2 घंटे लगेंगे समझाने में. When you are solving these questions, the assumption is you already know the concepts and now you are just looking to apply those concepts to the question and looking for the answers. What is the correct answer here if you are stuck in some question? नहीं तो you need to go back and read how to solve these questions. वहाँ पे फिर समझ में आएगा कि how did I do this? How did I use this formula? Okay? चलो next. Question number 16, if you see, they are saying 7 into 24 is 25. Now if you know 24 का square, 25 का square is 625, है ना? 625 is nothing but 24 square plus 49.
If you see this 25 square is nothing but 24 का square plus 7 का square. So this is the coding pattern they have used. Now how would you know? In the class I tell you, है ना, क्लास में क्या, मैं एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ स्क्वायर्स के बारे में कि how do you find the square of each numbers to each 2-digit number without knowing much of the squares. जैसे I need to know 1 to 10 के सारे squares and I need to know 10 square, 20 square, 30 square, 40 squares and so on. And I can find all the squares of 2-digit number. कैसे होता है वो? जैसे अगर 24 का square you know, right? So 25 का square कुछ नहीं होता. 25 का square होता है, sorry, 25 का square होता है 25 square equals to 24 square plus 24 plus 25. You are going from 24 to 25, so you need to add 24 as well and 25 as well. Because I know this, I know that I overall have to add 49, and because I know this, I could figure out that this is based on this. Okay, 25 square is 24 square plus 49. And similarly, 20 square, which is 400, is nothing but 12 square plus 16 square. Then what is the value of 16 and 63? है ना, 16 and 63. So basically we need to find something like 16 square plus 63 square is square of some value. ठीक है. Now 16 में the unit digit will be 6. Okay. अब देखो unit digit से solve कर रहा हूँ, मेरे को भी पता नहीं आंसर. Here 16 के square में unit digit will be 6. 63 के square में unit digit will be 9. When I add this, the unit digit will be 5. अब 5 के कुछ भी root का मैं unit digit लूंगा तो वो 5 ही आना है, right? So the answer to this question will be 65. यूनिट डिजिट का यूज किया, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने कुछ कैलकुलेट किया ही नहीं, स्क्वायर वेयर क्या है, आई डायरेक्टली यूज द यूनिट डिजिट एंड टोल्ड यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन सी 65. Now this is the application. Again I am repeating. 16 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट इज 6. 63 के यूनिट स्क्वायर 63 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9. 9 plus 6 is 5. जो भी सम आएगा उसका आपको रूट लेना है. यू नीड टू टेक द रूट ऑफ द सम विच यू विल फाइंड फ्रॉम 16 स्क्वायर प्लस 63 स्क्वायर. जो भी रूट है ऑफ द यूनिट डिजिट इज एंडिंग विथ 5, इसका जो भी रूट आएगा दैट विल एंड विथ 5, क्योंकि 5 into 5 से ही 5 आना है ना. तो ओनली वन ऑप्शन वाज देयर, 65. इवन इफ आई डोंट नो और आई डोंट इवन हैव टू कैलकुलेट 63 का स्क्वायर. दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? You can directly solve the question. Calculation में बहुत help होती है. You don't have to multiply things बार बार. You can directly use unit digit divisibility and remainder के concepts to get to the answer very quickly. But that will develop with understanding only. अभी what you can do is directly apply 63 का square and 16 का square and add. You will find that the number you find is the square of the number 65. Understood? चलो. अब क्या बोल रहा है भाई, प्राइस इंक्रीज होती है आपकी परचेजिंग पावर. इफ द परचेजिंग पावर इज सेम, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, द क्वांटिटी यू कैन बाय डिक्रीजेस. दैट इज द concept used here. The petrol price shot up by 10% as a result of the hike of in crude prices. The price of the petrol before the hike was 90 per liter. A person travels 200 km per month. His car average is इतना. बाद में भी कार का एवरेज तो सेम रहेगा. So initially, by how much kilometers should he reduce his travel if he wants to maintain his expenditure? Now expenditure is nothing but price into quantity. Price into quantity initial. Okay, initial quantity initial is equals to price which is shot up by 10%. तो 9 का कितना हो गया होगा, 99 into quantity final. एवरेज इज सेम, क्वांटिटी 1 के लिए वजह से क्वांटिटी इनिशियल. सो क्वांटिटी इनिशियल, सॉरी, सो क्वांटिटी फाइनल अपॉन क्वांटिटी इनिशियल इज इक्वल्स टू 10/11. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इनिशियली जितनी भी क्वांटिटी थी, क्वांटिटी इनिशियल ज़्यादा ही थी, तो दे वो ट्रैवल 20/100. ना क्वांटिटी फाइनल जो होगा उसका रेशो एंड दिसका रेशो हैज़ टू बी 10:11. तो दिस हैज़ टू बी 2000.
The difference here is 200. Initially, if the quantity was more, you were going to travel more because the average of the car remains same. 16 पहले चल रहा था, अभी भी 16 चलेगा. Price hike से average थोड़ी कम हो जाएगा गाड़ी का. So, if you are initially covering 20 to 100, the ratio of initial to final unitary method say now is 10 is to 11. So now you will travel only 2000 kilometers. The difference between these two is 200. Even if you multiply this 16 kilometer per liter, na, it doesn't make any difference. It doesn't make any difference, but because everything is in ratio. जब ratio में होता है तो you can directly apply the unitary method to find the answer. So here you need to reduce your travel by 200 kilometers to by using the new price. Okay, understood? Chalo, next 18, 19 and 20 we need to do, and then we will move to the questions ahead. So let's see what is this now. A 4-digit number n is such that when divided by 3 leaves a remainder 1. So divided by 3 leaves a remainder 1. ठीक है, तो एक तो होना चाहिए कि -1 करूंगा, दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. तो -1 करूंगा, दिस इज 7, 3, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये आप हटा सकते हो. 171 इज डिविजिबल बाय 3, 177 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये होगा 1, यहाँ पे 181 -1, तो ये नहीं हो सकता. These two numbers are there which when divided by 3 leaves a remainder 1. ठीक है, now the number has to leave a remainder 3 when divided by 5. अगर इसको 5 से डिवाइड करोगे 1072 को, the remainder is 2, तो this is incorrect. The only option is this 1078. ये तो ऑप्शन से you can solve. Okay, when you divide with 3 the remainder has to be 1, you will be left with two numbers 1072 and 1078. Okay, now okay, when you divide the number with 5 the remainder has to be 3. Only in 1078 you will find the remainder to be 3. So only 1078 is the number that satisfy the condition. Okay, now inequality is getting importance every year now, है ना. अभी recent years में they have started giving you questions from inequality. So what you need to do is every time you will find a question on inequality you need to arrange them in one order. वन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सपोज यहाँ पे देखो, इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन यू दैट b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो आई विल राइट इट लाइक दिस, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a. अंडरस्टूड? नाउ b इज ग्रेटर देन c, तो b इज ग्रेटर देन c. नाउ c इज लेस देन d, तो c इज लेस देन d. नाउ d इज ग्रेटर देन e, e इज ग्रेटर देन f, f इज ग्रेटर देन इक्वल टू g इक्वल्स टू h. नाउ एवरीथिंग इज इन greater terms, right? So now b is always greater than e. Now we can't compare b. If you see here, we can't compare b with e. There is no common link. If we can't compare b and e, we can't conclude this. This is incorrect. Now let's look at the second thing. Here you can write p is greater than q equals to r, greater than equal to s equals to t. Now t, u is greater than equal to t equals to s है यहाँ पे, and u is equals to v, and v is greater than w. S is always less than less than v. Now if you see this sign ना, s can be equal to v as well. ठीक है, less than equal to लिखा हुआ है ना, s can be equal to v as well. ठीक है, तो s will be always lesser than v. No, this is also incorrect. So the option D is correct. Neither one nor two. Neither one nor two. So here the answer to this question number 19 has to be D. Okay. Simple question. जहाँ इस टाइप के यूनिट डिजिट के क्वेश्चन मिले, सॉल्व करो, नंबर लो. Easy question. Why? If you see the numbers multiplied are 1, 3, 5, 9 and so on up to 999. They have not multiplied a single even number. एक भी even number होता तो unit digit has to be 0. Why? 2 and 5 आ जाता तो 0 हो जाता. Suppose what is 5 into 3? 15. What is 15 into 7? कुछ भी कर लो. The unit digit has to be 5 always. There is one 5 here. Now if you multiply anything, odd numbers multiply, keep on multiplying odd numbers, and there is one 5, you will always find the unit digit is 5. 15 7 जा 105 आएगा, फिर उसको 9 5 से करोगे, again unit digit will be 5, फिर 5 5 5 5. तो always the unit digit for this number has to be 5.
ठीक है, always the unit digit of this number has to be 5. Understood, right? So we have done 20 questions. Okay, let's move ahead to question number 21. I hope you are getting all the points I am trying to make here, right? Chalo, let's start with the question number 21. Okay, so the passage is, one of the dismal realities of agriculture sector in independent India has been there is that it never experienced a high growth phase. Unlike the non-agricultural economy, the highest decadal growth was 3.5% in the 1980s. Also, after experiencing a spurt in decadal growth during the 1980s, agricultural growth suffered relatively stagnation thereafter. This is in sharp contrast to the non-agricultural growth, which constantly increased from 1980s to 2000s. Okay, so corollary is a extension of the argument. Basically, if you don't know what is the meaning of corollary, corollary is if this information is true, what is the extension of this logic or the information. The benefits of economic reforms percolates down more slowly to the agriculture sector than in the other sectors of the economy. If the information given in the passage is true, what can be the possible extension of the thought? So this can be an extension of the thought that the benefit of the economic reforms percolates down more slowly to the agriculture sector than compared to the non-agriculture sector. ठीक है, बाकी options भी देख लेते हैं एक बार, और कोई अच्छा option मिल जाए तो. For India, the Green Revolution was not, कुछ मतलब ही नहीं है, बात ही नहीं की. India lagged behind other countries in adopting mechanized, पता ही नहीं है कि किसके बारे में. Rural to urban areas result in, now this was not the reason given. ठीक है, कुछ और हो ही नहीं सकता. यहाँ पे जो तीन चीजें डिस्कस की है उसका कोई लेना देना नहीं है. बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पैसेज, इफ यू नो माय टर्मिनोलॉजी, हाउ आई सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. So these three options are beyond the scope of the passage. Matlab, these three points are not talked about in the passage. So we can't select those as the correct answer to this question. Understood? Next, with reference to the following passage, the following assumptions have been made. The growing divergence between the fortunes of agriculture and non-agricultural economy in India could have been contained by adapting large-scale cultivation on commercial crop and viable corporate farming. No such solution is discussed in the passage. Providing free insurance for all crops and heavy subsidies. No such discussion is done in the passage. We don't know the solution, so we can't assume कि ये होने से कर देते है ना. Even after doing everything, सब करने के बाद भी agriculture growth उतना नहीं हुआ. So we don't know. और इसके बारे में passage में कहीं बात है नहीं, तो ये दोनों options नहीं होने चाहिए according to me. Okay, so option D has to be the answer here. चलो next. In our country, handlooms are equated with a culture that ensures a continuity of tradition. This idea has become part of the public policy framing and provides a legitimate basis for the state to support the sector. But the notion of tradition as a single linear entity is being strongly contested today. Okay, उसके वजह से problem क्या आ रही है? The narratives dominant in defining culture tradition in a particular way are seen to have emerged as the identities and histories of large sections. The discounted and at times forcibly stifled identities are fighting for their rightful place in history. Against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry, it is not surprising that large section of the population choose to ignore it. Handlooms are equated with a culture that ensures a continuity of tradition, but the problem with this is that properly representation is not there in history. So against this backdrop, when we promote handloom as a traditional industry, it is not surprising that large section of the populations are choosing to ignore it. है ना? These are some of the main points. बीच में भी कुछ है, but the notion of tradition as a single linear entity is being strongly contested today. What is the contestation? The narratives dominant in defining culture in a particular way are seen to have emerged as identities and discounted and at times forcibly stifled identities are fighting for their rightful place in the history. ठीक है, अगर सही से पता नहीं होगा तो दिक्कत ही आएगी. Let's see the options now. Which of the following statements best reflect the most logical and rational message conveyed by the author? When we need to free the handloom industry from the limited narrative linked to perceiving cultural heritage. इसी के साथ दिक्कत आ रही है, तो they are saying something like this, right? So let's see, देखेंगे इसको कि ये ऑप्शन हो सकता है क्या, और क्या हो सकता है भाई इसके अलावा. फोन हो जाओ बंद. और क्या दिया हुआ है?
कंटिन्यूड स्टेट सपोर्ट टू द हैंडलूम, अब स्टेट सपोर्ट की कोई बात नहीं है, हटा दो इसको। हैंडलूम यूनिट्स, हाउस होल्ड यूनिट्स ऑफ हैंडलूम सेक्टर शुड बी मॉडर्नाइज एंड मेड एन इकोनॉमिक वायबल। अब ये क्या करना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट डिस्कस्ड। हमको पूछ रहा है मैसेज, तो ये सब मैसेज थोड़ी हो सकता है कि ये कर दो वो कर दो। सॉल्यूशंस, implications can't be the message of a passage, understood? मैसेज वर्ड का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। यू कांट जस्ट सेलेक्ट एनी कि सर ये सॉल्यूशन होना चाहिए इस प्रॉब्लम का, नो, द क्वेश्चन इज मैसेज, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड अ सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, you don't have to find solutions. Handloom products need to be converted into machine made design, again कोई रिलेवेंस ही नहीं है इन टॉपिक्स का मैसेज के लिए, टाइटल के लिए। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल स्टेटमेंट थोड़ी बना दोगे टाइटल ऑफ द पैसेज, ठीक है। सो वी नीड टू फ्री हैंडलूम इंडस्ट्री फ्रॉम द लिमिटेड नरेटिव लिंक टू प्रिजर्विंग cultural heritage. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. There is no need for the state to be involved in any manner in the handloom sector. कैसे भी जरूरी नहीं है ना, we can't make such claim. Handloom products are no longer appealing and attractive. Appealing and attractive है नहीं है, that is not talked about, ठीक है। उस रैपिडली चेंजिंग मार्केट की वजह से नहीं, हम कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और कैसे परसीव करवा रहे हैं लोगों को, उसमें दिक्कत है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। डन, 24 तक हो गया भाई, अब कहाँ चलना है, पॉइंट पे आ जाइए थोड़ी देर के लिए। कंसिडर द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ द नंबर्स 2, 3, 5, 7 and 9। बेसिकली ऑल द नंबर्स विच आर प्राइम। 11 तक किससे चेक करते हैं, ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू 11, 121 तक यू नीड टू चेक द डिविजिबिलिटी विद 2, 3, 5 and 7 ऑल आर देयर। तो बेसिकली वी नीड टू चेक द प्राइम नंबर्स। द क्वेश्चन इज गुड because we need to find all the numbers, all the natural numbers which are not divisible. So prime numbers तो you will find 1, everyone will forget 1. 1 is also a natural number which is not divisible by these numbers. तो 1 होना चाहिए, ठीक है। फिर 2, 3, 5, 7 तो करना नहीं है, तो 11 से चालू करो। 11 हो गया, 13, then 17, 19, 23, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29, 31, 33 नहीं होगा, 35, 37, 37 होगा, 39 नहीं होगा, 41, 43, 47, 49 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 53, 55 नहीं होगा, 57 नहीं होगा, 59, ठीक है। ऑल दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, मैं प्राइम नंबर्स लिखते जा रहा हूँ सारे, ठीक है। 59 हो गया, फिर 61, 63 नहीं होगा, 65, 67, ठीक है। 69 नहीं, 3 से डिविजिबल है। 71, 73, देन 77 नहीं होगा, 79, ठीक है। 79, फिर 81 नहीं होगा, 83। प्राइम नंबर्स या तो याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। मेरे को पता है कैसे चेक करते हैं, कैसे, यू नीड टू चेक द डिविजिबिलिटी विद 3 बाय रिमूविंग सम ऑफ द नंबर्स। जैसे 91 हटाना है, 77 हटाना है, ऑल दीज नंबर्स, ठीक है। तो आई एम डूइंग दैट ओनली, चेकिंग डिविजिबिलिटी विद 3। तो 87 देखो 3 से डिविजिबल है, 8 + 7 15, राइट, तो वो नहीं होगा। 89, 17, 89 होगा। 91 नहीं होगा, 93 नहीं होगा, 97, 99, 97 होगा। So how many such numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. So question number 25 का answer is 22. There are 25 such numbers, 22 such numbers from natural numbers which are not divisible by 2, 3, 5, 7 and 9. Basically you needed to find all the prime numbers along with, ये मत भूलना, गड़बड़ सारी यही होगी, जो लोगों ने इसको गलत किया होगा उन्होंने 1 नहीं लिया होगा। 1 is a natural number but 1 is not prime and 1 is not divisible by 2, 3, 5, 7. जो गलती की होगी, इफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन, अगर आपने अटेम्प्ट दिया है या फिर आपने अभी खुद अटेम्प्ट किया है, तो भी प्रॉब्लम इज विद दिस। आप लोग क्या सोचते हो, एक बार प्राइम नंबर दिमाग में आया तो यू विल थिंक ओनली ऑफ द प्राइम नंबर्स। व्हाट हैपेंस टू 1? 1 is also not divisible, so उसको भी हटाना पड़ेगा ना। Understood? चलो डन। We have been given the value of x, right? For this we have to find the ratio where maximum value of x plus y, the maximum value of x plus y has to be x plus y की maximum value 8 + 7
एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x माइनस वाई के लिए x हैज टू बी द मिनिमम एंड y हैज टू बी द मैक्सिमम. सो दिस इज 15 by -3. So the ratio is -5, minimum ratio. Okay, maximum value of x plus y divided by minimum value of x minus y has to be -5, which is not in the option. The option should be none of the above. x plus y में maximum के लिए we have to take the maximum possible values of x and y. ठीक है, and minimum value of x minus y के लिए we have to take the minimum values of x and maximum value of y. Why? Because we need to subtract y. तो वो maximize करेंगे and जो positive value है we will minimize. Understood? चलो ये भी हो गया. Let both p and q be prime numbers such that p and k be prime numbers such that p square plus k is also a prime number less than 30. ठीक है, which one of the following is the possible value of k? देखो 2 के साथ 4 हो सकता है, 2 स्क्वायर के साथ क्या क्या वैल्यूज हो सकती है सोचो. सो 2 स्क्वायर प्लस 3 7 हो गया. 2 स्क्वायर प्लस 7 11 हो गया. ये सोचते जाओ हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर विच आर लेस देन ऑल्सो प्राइम नंबर लेस देन 30. तो ये दिस हैज टू बी लेस देन अ प्राइम नंबर विच इज लेस देन 30. ठीक है, अभी 4 के साथ क्या हो सकता है, 13 भी हो सकता है. 2 स्क्वायर 11 की तो नहीं होगा, फिर 13 हो सकता है. 13 प्लस 4 इज 17. और क्या हो सकता है 2 स्क्वायर के साथ, 4 के साथ 13 हो गया, 17 4 21 हो गया, 19 4 23. तो 2 स्क्वायर प्लस 19 23. Let both p and k be prime numbers such that this value has to be less than 30. सर्च करते रहो कितने मिलेगा. और क्या क्या है भाई, 19 के बाद क्या नंबर प्राइम नंबर होता है, 23. 23 के साथ 27 हो गया, 23 हो गया, 25 27 29 25 वो बड़ा हो गया. ठीक है, तो वो तो नहीं हो सकता. देन थर्ड सर्च फॉर 3 स्क्वायर 9. 9 प्लस p and q भी a प्राइम नंबर सच दैट 9 प्लस 2 कर सकते हो 11. ठीक है, 9 के साथ अब 5 करोगे तो 14 हो गया. नहीं, 9 के साथ अब बाकी सारे देखो 9 के साथ और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है. क्यों? क्योंकि 9 इज अ ऑड नंबर. बाकी सारे प्राइम नंबर्स अदर देन 2 आर ऑड नंबर. ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इज इवन, है ना, तो उसके साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. 5 स्क्वायर के साथ भी क्या करोगे, 5 स्क्वायर इज 25. 25 के साथ 2 से ही पॉसिबिलिटी है 27, वो भी नहीं होगा. उसके बाद कोई नंबर के साथ नहीं कर सकते. और उसके बाद 5 स्क्वायर के बाद तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं. जैसे 9 के साथ ओनली यू कैन मेक अ प्राइम नंबर बाय एडिंग 2. और कुछ भी नंबर करोगे तो इवन नंबर बन जाएगा ना, ऑड प्लस ऑड. पॉसिबल ही नहीं है. फिर 5 स्क्वायर के साथ 25 के साथ यू हैव नो वैल्यू. 25 प्लस 3 इज 28, नहीं होगा. ऑड 2 ही कर सकते थे. 27 इज डिविजिबल, वो कर नहीं पाओगे. 1 2 3 4 5. तो इसका आंसर तो बी होना चाहिए. देयर आर कितनी वैल्यूज ऑफ के की कितनी वैल्यूज मिली आपको, 1 2 3 4 5. ओके, कहाँ तक पहुंच गए भाई हम, 27 तक हम पहुंच गए. इट्स ऑलमोस्ट 1 आवर, है ना. 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से. यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन फटाफट तो नहीं होंगे, अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि है. Now there are n sets of numbers each having only 3 positive integers with LCM equal to 1001 and HCF is equals to 1. Common factor has to be 1 and the LCM has to be 1001. This divisibility में you learn this कि this is nothing but 7 into 11 into 13. So basically for the LCM to be 7 into 11 into 13, the 3 numbers has to be such that कि उनके मल्टीप्लीकेशन में प्राइम फैक्टर 7 11 13 आ जाना चाहिए. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट आर द नंबर ऑफ सेट्स, है ना. सो मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ. देखो अगर मैं 3 नंबर ये लेता हूँ 1001, ठीक है, द n सेट ऑफ नंबर ईच हैविंग 3 पॉजिटिव इंटीजर्स विद एलसीएम दिस. ठीक है, आई कैन टेक दिस एज 11 एंड दिस इज 1. द एलसीएम ऑफ दिस नंबर इज 1001. फिर मैं ले लूंगा 1001 13 1. स्टिल HCF इज 1, LCM इज 1001. 1001 7 1. ठीक है, now I can take 13 7 11 also. These 3 numbers can be there. ठीक है, अभी देखो 1001 7
7 और 13 भी हो सकता है, 1001 7 और 11 भी हो सकता है, 1001 11 13 भी हो सकता है. Still the HCF is 1, the LCM is 1001. फिर क्या हो सकता है, 1001 77, 7 और 11 का 13 कर दिया, इनमें कुछ कॉमन नहीं है. 1001 7 के साथ 11 किया था, 13 कर सकते हो, 70 91, तो इधर 11 कर दो. फिर 1001 11 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 143, इधर 7 कर दो. सो देयर आर मल्टीपल, आई कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो मैंने आपको दिखा दिया, और भी पॉसिबिलिटी होंगी, राइट. तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मोर देन 8. देयर आर more than 8 set of numbers for which the LCM is 1 and the HCF is 1001. मैंने दिखा भी दिए. If you take any of the three numbers, you will find the LCM is always 1001 and the HCF has to be 1 only. Yeah, understood. क्योंकि मैंने क्या make sure किया HCF 1 करने के लिए, the factors needs to be different. LCM करने के लिए 7 11 13 आ जाने चाहिए मल्टीप्लीकेशन में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी नंबर में. इतना मेक श्योर कर लोगे तो यू विल मेक श्योर दैट द LCM इज 1001 एंड द HCF इज 1. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार नंबर सिस्टम के, अगर मैं बताऊँ तो, है ना. ठीक है, उस दिन बहुत दिक्कत हुई थी लोगों को, नेक्स्ट डे भी आए हैं लोग सॉल्यूशन करने, है ना. तो दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस. तो अभी CSAT इज increasing the level day by day. You can't think कि पहले जैसे कि we will directly go to the paper and do the exam, देंगे और देखेंगे. नहीं भाई, पहले जैसे नहीं कर सकते. You need to be prepared. You need to know which question to leave. जैसे this is a question which you should leave in the paper. अगर आपको unit digit and remainder you don't know. ठीक है, फिर भी let's try to solve this. Now what is given to you? PQR is a 3-digit number, PPT is a 3-digit number, PSB a 2-digit number, where PQRST are distinct non-zero digits. Non-zero digits क्या क्या होती हैं भाई साहब? 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These are non-zero distinct digits. Now यहाँ पे 3 is gone. ठीक है, Q equals to 3 आपको पहले से they have given that Q equals to 3 है. Q equals to 3 है. Okay, now if you solve this, जब भी these types of questions are there, I always tell the students that ये जो question है ये solve होंगे expansion से या unit digit से, और कुछ इसमें कर नहीं सकते हो. So यहाँ पे you can write 100p plus 10q plus r minus 10p minus s is equals to 100p plus 10p plus t, है ना. 100p and 100p are gone. q equals to 3, तो इसको मैं 30 कर देता हूँ. ठीक है, 30 plus r is equals to 20p plus s plus t. ठीक है, now p can take what values? यहाँ पे r is a digit, 30 plus r, this number at max 30 plus r, max कितना हो सकता है? मैक्सिमम हो सकता है 39. ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है 39. p की वैल्यू 2 हो सकती है क्या? P2 हो गया तो ये 40 हो गया ऑन द राइट हैंड साइड. इट कांट बी. तो ओनली देयर इज वन वैल्यू ऑफ P, ओनली वन वैल्यू ऑफ P. P हैज टू बी 1. ओनली देयर इज वन वैल्यू ऑफ P फॉर विच दिस इक्वेशन विल होल्ड, क्योंकि इफ P is equals to 2, 39 से ज्यादा हो गया ऑन द राइट हैंड साइड, दे कांट बी इक्वल. सो P equals to 1 has to be there. As soon as P equals to 1, 30 plus R is equals to 20 plus S plus T. 10 plus R is equals to S plus T. This is the relationship you will get. 1 is gone, 3 is gone, Q आ गया है, P आ गया है. All are distinct. You need to find value of R, S and T. ठीक है, so जब R को 2 रखोगे 12, 5 और 7 कर सकते हो, है ना. So when R equals to 2 है, S and T, S plus T is equals to 12. तो 12 can be 9 plus 3 तो नहीं हो सकता, 5 plus 7 हो सकता है. ठीक है ना, या फिर 7 plus 5 हो सकता है. तो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ R एंड S कैन बी 2, 5, 2, 7.
2,5 2,7 यही हो सकती है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है। S5 भी हो सकता है, S7 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ये? और क्या, मैं इसकी पॉसिबिलिटी डालते जा रहा हूँ। अब r इक्वल्स टू 2 किया तो 1 तो हो नहीं सकता। सो यही दोनों पॉसिबिलिटी, यहाँ से 2 आई। फिर r इक्वल्स टू 3 नहीं हो सकता, r इक्वल्स टू 4 रखो तो 14। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें बेसिकली वैल्यूज पुट करके देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या रखोगे, कैसे चेक करोगे? ऐसे ही करना है, नेक्स्ट वैल्यू चेक करो। एक और कंडीशन है विच आई हैव नॉट यूज्ड, वन मोर कंडीशन इज देयर, t हैज टू बी लेस देन 6। सो t हैज टू बी लेस देन 6 में देखो ये वाली चीज नहीं हो पाएगी फिर ना, इसमें एक मैंने कंडीशन छोड़ दी। व्हेन t हैज टू बी लेस देन 6, 1 और 3 नहीं है, तो t की पॉसिबिलिटी क्या क्या बच गई है? t से स्टार्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन ना। t की पॉसिबिलिटी हो सकती है 2, 4 और 5। व्हेन t इज इक्वल्स टू 2, t इज इक्वल्स टू 2 हो गया तो 8 प्लस r इक्वल्स टू s। फिर व्हेन t इज इक्वल्स टू 4 हो गया, 6 प्लस r इक्वल्स टू s। एंड व्हेन, देखो अभी कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए, t इक्वल्स टू 5 हो गया, 5 प्लस r इक्वल्स टू s। r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, वो ऑलरेडी है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है। तो इसका कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है, ये वाली चीज़ का 1 हो नहीं सकता। 2 होते ही डिजिट s बड़ी हो गई, तो r की क्या वैल्यू हो सकती है यहाँ पे? r को अगर मैं 2 रख दूँ, r इक्वल्स टू 2 कर दूँ, r इक्वल्स टू 2 कर दूँ, तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 8। ये पॉसिबल है, ठीक है। फिर r इक्वल्स टू 4 रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता, t इक्वल्स टू 4 है। r इक्वल्स टू 5 रखूँगा तो नहीं होगा, तो ये एक वैल्यू होगी। फिर t इक्वल्स टू 5 हो गया, तो r इक्वल्स टू, t इक्वल्स टू 5 में 5 हटा दो, r इक्वल्स टू 2 रखोगे तो r इक्वल्स टू 2, r इक्वल्स टू 2, s इक्वल्स टू 7। लंबा ही क्वेश्चन है ना, कर सकते हो। r इक्वल्स टू 4 रखोगे तो r इक्वल्स टू 4, s इज इक्वल्स टू 9। एंड ये खत्म, और कुछ नहीं पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, तो 1 2 3, देर आर 3 सच वैल्यू। क्या क्या r और s की क्या क्या हो सकती है? 2,8, 2,7 एंड 4,9। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आई हैव सीन इन CSAT। CSAT में इससे अच्छा क्वेश्चन आई डोंट थिंक अभी तक आया हुआ है, क्योंकि यूनिट डिजिट का बेस्ट यूज किया है, पॉसिबिलिटी का बेस्ट यूज किया है, कंडीशन अप्लाई, और आजकल क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं। तो एक्सपांशन ऑफ नंबर से वी फाउंड अ रिलेशनशिप दैट 10 प्लस r हैज टू बी s प्लस t। ठीक है, p इक्वल्स टू 1 ऑलरेडी डन है, q इक्वल्स टू 3 ऑलरेडी डन है, t की वैल्यूज आर 2 4 5 रिमेनिंग बिकॉज t इज लेस देन 6। सो उसमें t इक्वल्स टू 2 रखा, देयर इज नो सॉल्यूशन पॉसिबल। t इक्वल्स टू 4 रखा, t इज इक्वल्स टू 5, देयर आर 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस। अंडरस्टूड? सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर यू टू अटेम्प्ट। छोड़ना है बेसिकली इसको, पेपर में आ जाए तो ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना इस पर। अंडरस्टूड? एक कंडीशन, कोई भी कंडीशन नहीं छोड़ सकता एक्चुअली। जैसे मैं पहले स्टार्ट किया इसको, t लेस देन 6 छोड़ा तो अटक गया, क्यों? आई कुड सी कि ये कैसे हो रहा है ना, समझे? तो फिर t लेस देन 6 में पॉसिबिलिटी, जब यहाँ पे फंस जाओगे तो अटेम्प्ट कहाँ से करना है कि कौन सा, यहाँ पे कहाँ पे फंसने की बात कर, सपोज ये आ गया, इसके बाद द कंडीशन हैज टू स्टार्ट। कंडीशन क्या? टी पे है तो टी से स्टार्ट करेंगे, आर पे होती तो आर से करते हैं, बिकॉज आई डेंट सी टी तो मैंने आर से स्टार्ट कर दिया था। ओके, चलो डन। नेक्स्ट, सो इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल पुट करो और बता दो कौन सा है। आई कैन सी ए बी सी सी, फिर यहाँ बी बी है, तो एक देखता हूँ मैं बना के इसको, जो मेरे को लग रहा है ऐसा तो नहीं है, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी सी, ए बी बी सी सी सी, बी सी बी ए सी, बी सी बी ए सी। ऑप्शन 30 का ऑप्शन सी, 30 का ऑप्शन सी इज द आंसर। अंडरस्टूड? आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब क्या है आगे? क्वेश्चन नंबर 31 से लेके अब कहाँ तक सॉल्व करना है हमको? 31 से लेके 40 तक पहुंचते हैं पहले। ओके, जस्ट अ सेकेंड। चलो भाई, अभी तक आइडिया लग गया होगा पेपर का, कैसा पेपर था, है ना?
चलो, let's start. Okay. In our country, regrettably, teaching and learning from the examination have been our forte, but the new demand of society and the future of work require critical and independent thinking. What is the requirement? Critical and independent thinking, learning through doing, asking questions from multiple disciplinary perspectives on the same issue, using evidence for building arguments, and reflecting and articulation. This is the requirement. Higher education should not be either be a mere servant of the government policy or a passive respondent to public mood. Higher learning is all about how to think rather than what to think. Teaching has to be reinvented. Which of the following is the central idea? India does not have enough resources for promoting. Does not enough resources is the problem. The institution of higher learning in the country should not be under the control of the government. ये बोला है, control किसके पास होना चाहिए? Classrooms approach to higher education should be done away with. Classroom approach ही हटा देना चाहिए. Classroom needs to be reimagined and teaching needs to be reinvented. अगर आपने last line भी पढ़ ली है तो you can easily figure out that this is the main central idea what the passage is trying to say. ठीक है, तो इसको हटा दो, D हो गया. फिर higher education is a constantly evolving subject that needs to align towards the development in the spheres of the society. Aligned है कि change होते रहना चाहिए with the requirement. In our country, sufficient funds are not allocated for promotion. This is not true. This is relevant. Okay. So the answer has to be A. Okay, answer has to be option A. So 32 का option is A. फिर क्या है भाई? 33, 34 and so on. पानी. चले आगे. Just a second. चलो भाई. If there is inequality in the pattern of population growth, there is greater inequality in food production and utilization. As societies become wealthier, their consumption of animal products increases. This means that a greater proportion of such basic foodstuff and grains and legumes that could feed humans directly is instead being converted into feed for poultry and large farm animals. Yet this conversion of plant-based food into animal food for human beings is far from efficient. Efficiency is the problem. Only 16% of the calories fed to chickens are recovered by us when we eat them. This conversion rate goes down to 5 to 7% on larger animals are fed grains. ठीक है, basically efficiency. Directly अगर grains खा लेते तो ज़्यादा energy मिल पाती, लेकिन वही आप when you consume proteins के नाम पे animals को, so efficiency goes down. उनको ज़्यादा जो हमको खाना चाहिए तो वो उनको देते हो, फिर उनसे प्रोड्यूस हम खाते हैं. ठीक है, तो efficiency level जैसे फूड वेब में भी आप देखते हो एनर्जी लेवल्स डिक्रीज. विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज, ठीक है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज? क्रक्स इज द मेन आर्ग्यूमेंट. देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर पब्लिक पॉलिसी टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ सीरियल बेस्ड. Animal based food is far less efficient than grain plant based food in terms of production and utilization. This is what the passage was trying to say. Directly अगर नहीं पढ़ूँ तो भी मैं बोल सकता हूँ यही हो. Plant based protein should replace animal based protein in our daily lives. प्रेफरेंस का बोला है नहीं. They have talked about कि कितना लॉस होता है और कितना कन्वर्जन हो पाता है एनर्जी का. Inequality in food production and consumption is inevitable in any fast changing. So inevitable का मतलब this can't be done away with. Extreme. This is extreme. ठीक है, तो you can't do this. तो option B. This is extreme. Let's look at the assumption question. With reference to the above, which of the following assumptions have been made? The food manufacturing and processing industries in every country should align their objective and process according to the changing needs of the society. अब इनको मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, हमको कुछ लेना देना नहीं है. यहाँ कुछ नहीं बोला पैसेज में. Wealthier societies tend to incur great loss of calories of food materials due to indirect utilizations of their agricultural produce. Right? Correct. Option B, 2 only. जो लग रहा है अभी, है ना, कि यही होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 34 हैज टू बी बी. ओके, चलो अब आते हैं मैथ्स वाले सेक्शन पे. नाउ देखो, नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट यू रीड किसमें? नंबर ऑफ जीरोस का कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़ते हो आप लोग? नंबर सिस्टम में, है ना. लेकिन नंबर ऑफ जीरोस ही पूछता रहेगा क्या वो हर बार? नंबर ऑफ जीरोस काउंट कैसे करते हो? हाउ मेनी 5s and 7s आर देयर?
नंबर ऑफ टेंस के लिए क्या करते हो, 2 और 5 कितने वो कैलकुलेट करते हो। वैसे ही 35 किससे बनता है, 5 से और 7 से। So how many 5s are there, how many 7s are there, that you need to know. Okay, how many 5s are there in this multiplication, how many 7s are there in this multiplication. So number of 5s, if I want to see here, I will find 5 into 5 into 5 into 2 into 2 into 2, 7 यहाँ पे है, ठीक है, there is no 5 here, there is 7 here, 7 into 7 into 7 है ये, यहाँ पे 5 है, तो 5 into 7 जा 5 7 जा 35, 7 जा, so यहाँ पे 7 1 बहुत है लेकिन 5 बहुत कम है। 7 तो I can say here also you will have 7 into 1 1 1 1 1, here also you will have 7 into 11. So number of 7s if you see are more, number of 7s are already more. So number of 35s, how many times number of 35s will divide this will be dependent on number of 5s. Number of 5s कितने यहाँ पे, 1 2 3 and 4, number of 5s are 4. So the power n can be divided by 4 times because 35 कितनी बार बन पाएगा, how many times you can make 35 from these factorization of these numbers, 4 times, because there are only 4 5s, you can multiply those 4 5 with 4 7s and you can get 4 35s only. उससे ज़्यादा 35s are not available here and hence we can't divide it with more. Done. What is the sequence? क्लास में तो आई ऑलरेडी टेल एवरी स्टूडेंट, अभी आई एम अगेन टेलिंग यू, फेवरेट है कुछ कुछ यूपीएससी के, यूपीएससी का फेवरेट है, वन इज डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, अदर वन इज डिक्रीजिंग कांस्टेंट एंड देन इंक्रीजिंग, ऑल दीज आर मल्टीप्लिकेशन बेस्ड सीरीज। जब मैं बताता हूँ कि इफ द टर्म्स आर डिक्रीजिंग देन रिमेनिंग सेम एंड देन इंक्रीजिंग, दैट मीन्स द नंबर ऑफ टर्म्स आर in multiplication. So if you see this, how can you make 12 into 18? You have to multiply with 1.5, you have to multiply with 2, you have to multiply with 2.5. So the trend has to be, this has to be multiplied with 1 and this has to be multiplied with 0.5. When you multiply 0.5 in 24 you will get 12 and when you multiply 12 into 1 you will get 12. So answer is B. The same question is asked 3 times in last 5 years, where the series is decreasing, constant, increasing. These series are multiplication based हमेशा. Understood? समझ में आया? चलो done. Next question number 37. P and Q walk along a circular track. They start at 5 a.m. from the same point in opposite direction. P walks at an average of 5 rounds per hour. 5 rounds per hour मतलब 12 minutes. 12 minutes per round, है ना? And what is Q? Q walks at an average speed of 3 rounds per hour, मतलब 20 minutes per round. ये 20 minutes per round, मतलब total distance आप जो भी हैगा उसको divide करोगे 12 से and 20 से. How many times they will cross each other between 5:20 and 7 a.m. ठीक है. Now जब they are going in opposite direction, ठीक है, opposite, ठीक है, opposite. So when they go opposite तो उनका क्या होता है, speed add होती है, relative speed is added. It takes 12 minutes per round, ठीक है, और ये takes 20 minutes per round. So अगर आप इनकी effective time of meeting निकालोगे, इसका suppose we have to find round जो भी है circumference that needs to be divided by 5 rounds per hour और 3 rounds per hour, है ना? कुछ भी एक एलसीएम लेके या कुछ भी कर सकते हो जिससे आपको डिवाइड करके ये वाले नंबर्स मिल जाए. देखिए जैसे इसमें आई कैन थिंक ऑफ, टाइम एंड वर्क में करते हैं वैसे कर लेते हैं, ठीक है. लेट सरकमफरेंस बी, बिकॉज ये 12 और 20 से है तो इसी का एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेट 12 का और 60 का ले 60 मीटर्स, ठीक है. तो 60 मीटर्स इन 12 मिनट्स, speed is 5 meter per minute. 60 meters in 20 minutes, speed is 3 meter per minute. Relative speed is equals to 5 plus 3 is equals to 8 meter per minute.
टाइम ऑफ मीटिंग फर्स्ट, टाइम ऑफ मीटिंग, ठीक है, टाइम ऑफ मीटिंग विल बी 60 का टोटल है बाय 8 मीटर पर मिनट, तो बेसिकली दिस इज 30 by 4, 15 by 2, 7.5 minutes. They will meet after every 7.5 minutes. They will meet after every 7.5 minutes. So first they started at 5, ठीक है, तो they will meet at 5, 0, 7 and 30, ठीक है, फिर they will meet at 5, 15, फिर they will meet at 5, 22, 30, फिर they will meet at 5, 30, फिर दे विल मीट, ऐसे ही करते जाएंगे, दे विल मीट एट 5:37, अरे लिखने दो भाई, 30, देन दे विल मीट एट 45:30, ठीक है, देन दे विल मीट एट, टाइम्स लिखते जा रहा हूँ, आई एम इंक्रीजिंग द टाइम विथ 7.5 minutes एवरी टाइम, 52:30, देन दे विल मीट एट 6, ठीक है, फिर बिटवीन बोला है, ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस टाइम, सो अभी तक दिस इज आउट ऑफ द रेंज, दिस इज आउट ऑफ द रेंज, 1 2 3 4 5 6, फिर दे विल मीट एट 6, 0, 7, 30, then they will meet at 6:15, then they will meet at 6:22, 30, ये वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, I want you to see the times, 6:37, 30, 6:45, 6:52 and 7. Now we want to find time between these two, तो ये भी नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, how many times, 13 times, between बोला है, ठीक है, तो between these two times they will meet 13 times, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके, 13 और 14 अब होगा तो इसमें चेंज एक ही हो सकता है जो पॉसिबल है, कि अगर उन्होंने ये एक्स्ट्रा टाइम 7 वाले को काउंट कर लिया, जो कि ये पहले एक बार कर चुके हैं, गन शॉट के क्वेश्चन में दे गेव 2 आंसर्स, वो भी एलसीएम रिलेटेड क्वेश्चन था, वहां पे भी दे हैड टू गिव 2 आंसर्स, लेट्स सी यूपीएससी कैसे आंसर करता है, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन व्हेन यू आर आस्किंग बिटवीन दीज 2 टाइम्स कितनी बार मिलेंगे, तो दे विल मीट 13 टाइम्स, ओके, 38, चलो 3 क्वेश्चन और ये निपटाते हैं फटाफट। सो व्हाट आर दी पॉसिबल ऑप्शंस फ्रॉम विच, तो इसमें ऑप्शंस पुट करके देखने हैं ना, तो मैं है ना, जैसे आई नीड टू फर्स्ट 15 और 4, जैसे यहाँ पे मैं s को क्या लिख सकता हूँ, डिवीजन, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, p क्या है प्लस, प्लस कर दूँ, r क्या है इनटू, इनटू कर दूँ, एंड q क्या है सब्ट्रैक्ट, तो दिस विल बी 4 + 3 × 20 - 4, तो दिस विल बी 60, तो 60 + -4 तो 60 आएगा, तो दिस इज इनकरेक्ट, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। सेकंड पुट करता हूँ, q क्या है सब्ट्रैक्शन, r क्या है मल्टीप्लिकेशन, फिर p क्या है एडिशन, और ये है डिवीजन, ठीक है, तो पहले डिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे प्लस करके दिस इज 5, यहाँ पे 60 - 45, 15 + 5 = 20, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन के QRPS, ओके, अंडरस्टूड, सिंपल था। A train overtakes two persons X and Y at an average speed of 3 km/h and 4 km/h in the same direction and completely passes them in, so पहले तो इसको चलो किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट कर लेते, बाद में मिनट में कर लेंगे, या फिर 5 × 5/18 करना होता है, 5/18 करके यू कैन कैलकुलेट इट इन मीटर पर सेकेंड, तो इसको अगर मैं मीटर पर सेकेंड में करूँ तो ये होगा 15/18 मीटर पर सेकेंड, और इफ आई मल्टीप्लाई दिस विल बी 20/18 मीटर पर सेकेंड। A tram overtakes two person X and Y at an average speed of this in the same direction completely, passes them in 8 seconds, and so basically length of tram क्या होता है, speed of train minus this men, तो 15/18 into पहले 8 सेकेंड में
length of tram equals to speed of train minus 20 by 18 into 9. Okay, so what is the length of train? L of t निकालना है पहले. Equating these two I can write 8 of st minus 15 8s are 120 by 18 is equal to 9 st minus 180 by 18. ठीक है, so st is equals to 60 by 18 which is nothing but 30 by 9 which is nothing but 10 by 3. Speed of train is 10 by 3 या 60 by 18 ही रहने दो because we need to 60 by 18 ही रहने देता हूँ क्योंकि 16 by 18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें पुट करूँगा तो फिर आई पुट दिस बैक हियर. ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू 60 by 18 माइनस 15 by 18, 50 by 18 into 16 by 18, 15 by 18 into 8. This is 45 by 18 into 8. 9 5s are 9 2s are 2 1s are 2 4s are. So length of train equals to 20. Length of tram is equals to 20 meters. Two equations, two variables, solve them, found the speed of tram and also the length of tram. The answer is option C. Okay. Now this question came in UPSC twice. एक और बार पहले आ चुका है सम ऑफ द डिजिट्स करके. सो इफ यू सी दीज नंबर्स, 1 का स्क्वायर इज 1, 11 का स्क्वायर इज 1 2 1, 1 1 1 का स्क्वायर इज 1 2 3 2 1. हाँ ठीक है, सो यहाँ पे ऑल द नंबर्स आर गोइंग अप टू 9 एंड देन डिक्रीजिंग फ्रॉम 9 टू अगेन 1. सो व्हाट इज दिस n? दिस इज 9 टाइम्स 1, 1 2 3. दिस 3 तक जाते हैं तो 3 तक गए, 3 देयर आर 3 ones, वी नीड टू गो टू 3. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का होल स्क्वायर. Then how many digits does the number n have? The number n has 9 digits. The number n have how many digits? 9 digits. Okay, so we have solved questions up to 40. I need a small break. You also can take a break and then we can start the paper again. Okay, chalo, let's solve question number 41 to 80 now. So the passage is, over the next 30 years, many countries are promising to move to net zero carbon, implying that household emissions will have to cut to close to nothing. Leading climate scientists reckons that at best half the reduction might be achieved through demand side measures such as behavioral changes by individuals and households. And even that would require companies and government to provide more incentives to change through supply side investments to make low carbon options cheaper and more widely available. Which of the following statement best reflects the central idea? Crux की बात है. Moving to net zero carbon is possible only by the reduction of household limit. Now only is an extreme statement. सिर्फ यही हो सकता है, but only this is the solution. Low carbon behavior in people can be brought about by incentivizing them. ठीक है, basically if you supply side से if you incentivize and make cheaper options available, then it can be done. So this is correct. Cheaper goods and services can be made available to people by using low carbon technologies. Manufacturing कैसे कर सकते हैं उसकी बात नहीं है. Manufacturing industry that use low carbon technology should be provided with subsidies. Subsidy देना नहीं देना, we are not bothered. ठीक है, जो बातें नहीं है पैसेज में उनके बारे में कोई मतलब नहीं है बात करके. Assumption में supply side investment in companies can result in low carbon behavior in people, right? This can do things, है ना? This can be done. People are not capable of adopting low carbon behavior. ऐसा तो कहीं नहीं बोला है कि they are not capable. तो only one. Very easy passage and very easy 2 questions. In only 50 years, the world's consumption of raw material has nearly quadrupled to more than 100 billion tons. Less than 9% of this is reused. Batteries of old vehicles contains materials such as lithium, cobalt, manganese and nickel. They are pricey and can be hard to obtain. Supply chains are long and complicated. Buyers' risks are being aggravated by their suppliers' poor environmental and labor standards. Reusing materials makes sense. Once batteries reach the end of their life, they should go back to the factories where their ingredients can be recovered and put into new batteries. ठीक है.
रीयूजेबिलिटी के ऊपर है. नाउ लेट्स सी. मैसेज पूछ रहा है ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स. कोई मतलब नहीं है. Every sector of economy should adopt the reuse of material resource immediately. Immediately का कोई लेना देना नहीं है. Circular economy can be beneficial for sustainable growth. Yes. Circular use of material resource is the only option for industry for their survival. Extreme options है दो, उनको हटाओ. Option C is the correct answer here. ठीक है. 44th क्या है? ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी. दे आर, बट पैसेज में ये अजम्पशन है क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की कोई बात अलग से नहीं की है ना, तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए. लोग बोल रहे हैं कि होना चाहिए, बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन इटसेल्फ अलग से बात नहीं. बैटरीज की बात की तो बैटरीज तो और भी जगह से आ सकती है. यू आर कनेक्टिंग इट विद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. लेट्स सी. इकोनॉमिक ग्रोथ इज कॉम्पेटिबल विद सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज या अलाइंड है ना, तो ऑप्शन बी होना चाहिए मेरे ख्याल से कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है. Okay, now let's look at the question number 45. किसका क्वेश्चन है? 20 pipes can fill 70% of the tank in 40 minutes. तो 70% in 40 minutes, तो 20 pipes इंडिविजुअली. देखो ये टेबल हमेशा बनाते हैं हम लोग, है ना. फिल करेंगे कितना टाइम, यहाँ पे टाइम लिखूंगा, यहाँ पे आई विल राइट वॉल्यूम और यहाँ पे आई विल राइट रेट. So 20 pipes can fill 70% of the tank in 14 minutes, मतलब full tank in 20 minutes. Another set of Y 10 pipes can fill 3/8 of the tank in 6 minutes. 3/8 in 6, तो 1 कितने में होगा? 8 into 6 by 3, तो 16 minutes होगा. तो 16 minutes में they can fill. Then Z 16 pipes can empty half of the tank in 20 minutes. तो 40 minutes में completely fill करेंगे. ये fill करते हैं, ये fill करते हैं, ये subtract. ठीक है. So we need to find some LCM of these three numbers. 8 into क्या है? 8 into 2 16. 16 into क्या होना चाहिए? 4 into 5 है 4. 16 into 8 into 5 है तो 16 में हो गया. 16 into 5 is 80. LCM ले ले. 80 को सब डिवाइड कर देंगे 80. तो fill rate is 4 per minute. Fill rate here is 5 per minute and subtraction में 2 per minute. Okay. Now if half of the pipes of X are closed, only half of the pipes of Y, if half of the pipes of X are closed, half of the pipe of Y are open, तो यहाँ से 2 हाफ करोगे 20 पाइप्स का तो 2 कंट्रीब्यूट करेंगे, ये प्लस 2.5 एंड ऑल द पाइप्स ऑफ Z आर ओपन -2. ठीक है, तो 2.5 पर मिनट फिल होगा. 50% फिल करने का मतलब है 40 इंटू कितना टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू 40 by 2.5. 8 into 5, 16 minutes. The answer to this question is 16 minutes. Option D. LCM method you should know कि individual times, if they have given individual times of completion of some task, you need to take the LCM of those numbers to take the total volume or total work. ये सबसे easy होता है. You don't even have to make equations. From total work and time you can find the individual rates. Now rates में just apply the condition and you can solve these questions. अगर time and work पे अगर कोई वीडियो आता है on the channel तो please look at it. Okay, I will tell you कि there are only 3 types of questions in time and work. उन 3 types of questions में 1 is based on formula, other 2 are based on LCM method. इसके बाद you don't even have to make the equations, you can directly solve time and work question, कोई भी होगा इसी से ratios से. Okay, done. तो answer is option D. Now n is a natural number, then what is the number of distinct remainders of this value when divided by 4? So when n equals to 1 में this number is 1 plus 2 3, तो remainder is 3. remainder यहाँ पे I can write remainder is 3. when n is equals to 2, this becomes 1 plus 4 5 में the remainder is 1. n equals to 3, this will be 1. 8 plus 1 9, the remainder is 1. n equals to 4,
this is 14 plus 1 17, the remainder is 1, n equals to 5, 32 हो जाएगा, 33, remainder is 1. तो if n is a natural number, then what is the possible number of distinct remainder? Distinct remainder कितने हैं? 2 ही हैं, 1 and 3. Only 2 distinct remainder are there. तो 46 का answer is option C. There are 2 distinct remainders when this whole expression is divided by 4. तो आंसर हो गया 46 का C. चलो let P be a number Q Q Q. Q Q Q क्या है भाई? Q into 1 1 1. Q into 1 1 क्या है? Q into 3 into 37. These are some numbers. divisibility में you need to learn कि 111 into 1001 is 111111. A 6-digit number 11111 6 times is always divisible by 3, 37, 7, 11 and 13. divisibility में अगर ये नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लेना. It is very important nowadays. Most of the questions are coming from here. divisibility में 2 और 3 की divisibility they have stopped asking. What they are asking is, do you know the factors of 1001? Do you know the factors of all the numbers of the form xyz xyz xy xy a and so on. ठीक है? These are the new types of questions. P is this number. What is the HCF of P? P क्या है? Q into 3 into 37. What is this number? This number is 37 into 1. 37 into 1 111 बचेगा तो 37 into 1 फिर क्या है? 3. 13 basically. So this is 37 into 3. What is the LCM? What is the HCF of these two numbers? HCF is the common factor. Highest common factor between these two is 37. So the HCF is 37. HCF of these two numbers is 37. समझ आया? ठीक है? So HCF of these two numbers is 37 because 37 is one of the common factors between these two numbers P and the number 481. Okay. Now what is the 489th digit in the number? तो यहां से यहां तक देखो ये नंबर्स हैं क्या? ये ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and so on. Basically digits हैं. I need to tell you 489th digit. This question is same as जो book के pages वाले question होते हैं. 1 to 9 में how many digits I have used? 9. तो -9. कितना बचा? 480. From 10 to 99, 2 digits are used everywhere and there are 90. तो 180 are more gone. 180 are more gone. तो बचे number of digits 300. अब 300 में each 300 digits, each number has 3 digit. So 100 3-digit numbers are there. Now 100 3-digit numbers में कहाँ से कहाँ जाओगे? मैं 1 to 9 I have counted, 10 to 99 I have counted, 10 to 99 I have counted. Now I have to count from 100 to 199. 100 है तो last number जो इसमें आएगा that is 199. उसकी last digit is 9. So the number 489th number of this series is 9. I am assuming क्योंकि ये this is a solution video, right? This is not where I need to teach you everything. So I am expecting that you know how to count the number of digits used in a book of page 199. तो 199 page की book में अगर if you try to find the number of digits used, you will find that the 489 digits are used. That is also here. The final digit of this expression will be 9. Okay, 48 is done. Let's move to 49. Now this is very interesting. Okay, mobile phone has been stolen. These are things are given. They have not given that only one person is telling the truth or one person is telling the lie. कुछ नहीं बोला है. तो you can't take anyone lie और वैसे इसमें 2 cases बनते हैं. There are 12 cases possible जब only one person is telling the truth. What if someone is telling half truth, half false, right? So we can't solve such questions, cannot be concluded according to me, because we don't know if one person is telling the truth, 2 person is telling the truth, or all the person are telling the truth, or who is telling the lie. Okay, that information is necessary. If you find this, read this question, कहीं पे भी नहीं दिया है कि who is telling the truth, who is not. Okay.
3 teams PQR participated in a tournament in which, एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, in which what happened? Teams play, a win fetches 2 points, a draw is 1, win is 2 point, draw is 1 point, and loss is for 0 points. Each team scored exactly 1 goal in the tournament. मतलब PQR ने तीनों ने एक गोल ही स्कोर किया. P got 3 points, Q got 2 and R got 1. P got 3 means he won one match and because 2 1 0 ही marks possible. तो 2 एक तो जीता और एक ड्रॉ किया. तो P और Q का कोई मैच होगा, Q और R का कोई मैच होगा और P और R का मैच होगा. Let me take suppose P won by Q, ठीक है, बट Q हार नहीं सकता. क्यों? Q एक जीत सकता है क्या? देखते हैं चलो. सो लेट मी टेक दिस एज 1 ड्रॉ कर लिया. तो P का जो दूसरा गेम है दैट हैज टू बी 1-1 हो गया. तो दूसरा गेम एक ही गोल मार सकता है. तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है. 1-1 पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? इट हैज टू ड्रॉ 1 एंड इट हैज टू 1-1 और एक ही गोल मार सकता है. तो इट हैज टू विन समवेयर एंड ड्रॉ समवेयर. सो सपोज अगर उसने Q के साथ ड्रॉ किया, इफ Q के साथ ड्रॉ किया, इट वुड हैव टू डिफीट R. ठीक है. नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ 3 इज दिस एंड दिस. Q ने भी एक स्कोर किया, अभी तक R ने कुछ स्कोर नहीं किया. तो 1-1. दिस इज द पॉसिबिलिटी. P हैज ड्रॉन 1, तो एक पॉइंट यहां से मिला इसको. पॉइंट्स आई एम मार्किंग विद दिस पॉइंट्स 1 1 1 1 0 2. So if you count, point of P is 3, point of Q are 2 and point of R is 1, है ना. The result of the match between P and Q is a draw, 0-0, correct. The number of goals scored by R against Q is 1, correct. Both the statement are correct. Option C. 50 का option C. ठीक है. Done. Let's solve question number, क्या बचा है भाई हमारे पास? 51 से 60 सॉल्व कर लेते हैं फटाफट. It is hard to predict how changes in the climate and the atmosphere's chemistry will affect the prevalence and virulence of agricultural diseases. But there is a risk that such changes will make some plant infections more common in all climatic zones, perhaps catastrophically so. Part of the problem is that centuries of selective breeding have refined the genomes of most high value crops. They are spectacularly at growing in today's condition, but genetic variations that are not immediately useful to them have been bred out. This is a good for yield but bad for coping with changes. A minor disease or even an unknown one could suddenly rampage through a genetically honed crop. तो इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में. वी हैव वेरिएशंस जो है उसको खत्म कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दैट now the plants are vulnerable to some disease. अगर आएंगे तो they can wipe out. So what is the central idea of the passage conveyed by the passage? Global climate change adversely affect the productivity of crops. No. Our total dependence on genetically honed crops entails possible food insecurity. Possible food insecurity in case of if they catch some disease, right? ठीक है, ये हो सकता है. Let's see. Our food security should not dependent on agricultural productivity alone. कोई बात नहीं. Genetically honed crops should be replaced with their wild varieties in our present cultivation. नहीं. The passage is trying to say our total dependence on GM honed crops entails possible food insecurity. अगर कोई disease आ गई तो ये problem आ सकती है. तो 51 का the option has to be B. Okay. चलो next 52 करते हैं. Global climate change can result in migration of several plant diseases to new areas. और दूसरा है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ आवर प्रेजेंट क्रॉप्स वुड इनेबल अस टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी. देखो ये तो क्लाइमेट कंडीशन चेंज कैन रिजल्ट इन माइग्रेशन ऑफ सेवरल प्लांट डिजीजेस टू न्यू एरियाज. ठीक है, शिफ्ट हो सकते हैं. साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ आवर प्रेजेंट क्रॉप्स वुड इनेबल अस टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी. पॉसिबिलिटी है. ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन दे कैन गिव यू दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो. डिपेंड्स ऑन दिस. नैरो विजन लोगे तो अलग आंसर आएगा, वाइड विजन लोगे तो अलग. अभी यूपीएससी प्लेज इन सच ऑप्शंस, है ना. तो अगर पैसेज के रिलेटिवली देखो कि वाइल्ड वेराइटीज की उसके वजह से हो सकता है तो हो सकता है. इसका ऑप्शन ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है. लेट्स सी यूपीएससी क्या देता है, बट मोर अप्रोप्रिएट आई थिंक, क्योंकि कनेक्टेड है बेस्ड ऑन द वेरिएशंस इन द प्लांट्स, तो वी कैन टेक सी एज वेल. ओके, डन.
समझ में आ गया? नाउ 53 एंड 54 क्या बोल रहा है भाई? A good statesman, like any other sensible human being, learns more from his opponents than from his fervent supporters. For his supporters will push him to disaster unless his opponents show him where the dangers are. So if he is wise, he will often pray to be delivered from friends because they will ruin him. But though it hurts, he ought also to pray never to left without opponents, for they keep him on the path of reason and good sense. Check में रखना जो होता है. The national unity of free people depends upon a sufficiently even balance of political power to make it impracticable for the administration to be arbitrary. क्या क्या नहीं कर सकते? एडमिनिस्ट्रेशन आर्बिट्री नहीं हो सकता, और अपोजिशन टू बी रिवॉल्यूशनरी और इनरिकंसाइबल. ठीक है, सो दोनों चीजें नहीं हो सकती. Which of the following statement best reflect the message conveyed by the author of the passage? Without opposition parties, the administration in democracy get more responsible. Without opposition parties ऐसा होगा कि नहीं, both are required. Democracy need to have revolutionaries होने चाहिए? No. Rulers in the democracy need to support the opposition for their political survivors. Political survival के ऊपर कोई question नहीं है. In a democracy, the opposition is indispensable for the balance of political power and good governance. Right? Correct. They are trying to make this point. With reference to the above passage, the following assumptions have been made. In a democracy, a strong opposition is required only if the head of the government is indifferent. No, only तो जरूरी नहीं. The more aggressive the opposition, the better is the governance in the democracy. No, यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी भी नहीं होना चाहिए, मना किया है ना, तो ऑप्शन डी. आंसर टू 54 इज ऑप्शन डी. चलो, वी हैव टू डू 60. तो यहाँ पे मैं 60 कर दूं, मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है 60. दिस इज +2 +3 +5 +7, तो ये होगा +11. एडिशन ऑफ प्राइम नंबर्स, तो 18 + 11 इज 29. डायरेक्टली दिख रहा था इसलिए कर दिया मैंने. ठीक है. नाउ P is the brother of Q. P is the brother of Q and R. They don't know the gender of Q and R. S is R's mother. S is R's mother and T is P's father. मतलब T is P's father. How many of the following statements are definitely true? Definitely true. We don't know the gender of Q and R. ठीक है, definitely true. S and T are a couple. Correct. Q is T's son. Q is T's son. We don't know. T is Q's father. T is Q's father. Correct. S is P's mother. S is P's mother. R is T's daughter. R is T's daughter. We don't know. And P is S son. Correct. So 1, 2, 3, 4. Only 4. Okay. Because we don't know the gender of Q and R, we can't comment on second and fifth statement. But rest of them we can do. देखो यहाँ पे what is the N क्या होता है? 14. MNO. ठीक है, दिस इज 15. 150 और 60, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इज दिस. नॉट में 14, 15 और 20, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट दिस. फिर नोट में 14 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 5 किया तो यू विल गेट दिस. नोट्स में 21000 तो आ ही गया. वी हैव टू सी एस क्या है. ठीक है, N O P Q R S 14 15 16 17 18 19. 19 से मल्टीप्लाई करो भाई इसको. 0 0 0 19 1 19 1 9 38 39 399000. ऑप्शन ए. 399000 ऑप्शन ए. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट कोडिंग. डायरेक्ट कोडिंग मतलब देखो यहाँ पे A इज एट थर्ड प्लेस, A का कोड है 4. यहाँ पे A इज थर्ड लास्ट, A का कोड है 4. सो बेसिकली डायरेक्ट कोडिंग. तो E का कोड देख लो, E का कोड है 1, सो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1. N का कोड देख लो, N लास्ट 3, तो 3 है, तो 3 आएगा. M का कोड देख लो, A से पहले 8, तो 8 आएगा. Y का कोड है 7, 71813, 71813 ऑप्शन डी. 71813 ऑप्शन डी. ठीक है, 57 का ऑप्शन डी. 60 का ऑप्शन सी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 58 एंड 59. 58 और 59 सॉल्व करते हैं.
लेट्स सी क्या है 58. द 5 digit number p q r s t all distinct digit such that t is not equals to 0. p is thrice of t. p is equals to 3t. s is greater than q by 4. s is greater than q by 4 while q is greater than r by 3. q is greater than r by 3. ठीक है. How many 5 digit numbers are possible? p q r s t. ठीक है. लेट्स सी. टी 0 नहीं हो सकता, टी 1 हो सकता है. ठीक है, टी 1 हो सकता है. टी 1 लेके ले लेते हैं. टी 1 लोगे तो पी को क्या होना पड़ेगा 3. टी 2 लोगे तो 6 और इसको 3 ले लोगे तो 9. नाउ आर 1 तो गया. R can be defined as all distinct digits and such that this is P 0 तो नहीं हो सकता. डन है. बाकी चीज़ें तो 0 हो सकती है, S R और T. तो इसमें बस अब पॉसिबिलिटी निकालते रहो, एक एक डिजिट ऐड करते रहो, देखते रहो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है. ओके. क्या करें, R को 0 रखें एक बार. R को 0 रखोगे तो Q आ जाएगा 3, S आ जाएगा 7. तो एक ये नंबर पॉसिबल है, लेकिन इसको 0 नहीं रख सकते क्योंकि Q आ गया 3, P ऑलरेडी 3 है, तो ये नहीं होगा. R को 1 रखो. R को 1 रखोगे, Q R को 1 भी नहीं रख सकते. R को 2 रखो. R को 2 रखो तो Q हो गया 5. Q हो गया 5 और ये हो गया 9. S इक्वल्स टू 9. तो एक नंबर ये पॉसिबल है. ठीक है. फिर यहाँ 2 R को 0 रखो. तो R को 0 रखोगे तो Q आ गया 3. फिर जैसे अभी इसकी पॉसिबिलिटी है तो मैं 3 वाला हटा देता हूँ. ठीक है, अभी ये सारा चलने देते हैं. जैसे T इक्वल्स टू 1 में आई हैव एग्जॉस्टेड, कुछ और नहीं हो सकता उसमें. ये सब कंडीशन लगा के सॉल्व करते रहो. 3 आ गया तो ये 7, एक ये नंबर हो सकता है. ठीक है. अब इसको 2 रखा, इसको 6 रखा. R को मैं 1 रखूँ. R को 1 रखूँगा तो ये आएगा 4 और ये आएगा 8. ये हो सकता है ना. R को 2 में रख नहीं सकता. 3 रखूँगा तो दिस विल बी 5 एंड वो 9. कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए. जस्ट चेक कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है. ठीक है, एक बार चेक कर लो कोई भी वैल्यू. ठीक है. और क्या हो सकता है, R को 2 लेंगे तो 2 नहीं ले सकते. 3 लेंगे तो इफ R इज 3 दिस बिकम्स 6 और दैट बिकम्स 10. तो वो नहीं हो सकता. तो T इक्वल्स टू 2 खत्म हो गया. विथ T इक्वल्स टू 3. T इक्वल्स टू 3 में P हैज़ टू बी 9. तो R अगर मैं 0 लेता हूँ तो दिस बिकम्स 3 विच इज़ नॉट पॉसिबल. R इक्वल्स टू 1 लेता हूँ. R इक्वल्स टू 1 तो दिस बिकम्स 4, दिस बिकम्स 7. R इक्वल्स टू 2 लेता हूँ, 5 और 9, वो भी नहीं हो पाएगा. 3 है नहीं. तो देयर आर 1 2 3 4 सच नंबर्स बेस्ड ऑन द कंडीशन. स्टार्ट किससे करोगे, वेयर डू यू नीड टू स्टार्ट, व्हाट आर द 3 कंडीशंस. T कैन नॉट बी 0. P इज 3 टाइम्स T. ठीक है, तो वहाँ पे कंडीशन लगेगी. T की 1 वैल्यू लो, P डिसाइड करो, ट्राई टू पुट वैल्यू ऑफ R बिकॉज R इज द स्मॉलेस्ट अमंग Q एंड S. तो R से स्टार्ट करो. तो एवरी टाइम व्हाट आई वाज डूइंग इज after placing T and P, I was checking the values through R और उसी से I can find these 4 solutions. Okay, understood? चलो आगे. 58 हो गया, 59 60 हो गया. 59 we need to do and then 20 more questions are left. Again देखो, I will always solve such questions through LCM method क्योंकि वो सबसे easiest है. X can complete 1/3 of the certain work in 6 days. तो complete work कितने में करेगा, 1/3 6 days में, तो complete 18 days. तो देखो X लिखूंगा, Y लिखूंगा, Z लिखूंगा. There are 3 things: their efficiency, amount of work they do in one day, then the time, individual times to complete total work, and the total work. So individual times taken by X is 18 days. Y can complete 1/3 of the same work in 8 days.
1/3 in 8, तो complete in 24 days. Z can complete 3/4 of same work in 12 days, तो complete work होगा 12 into 4/3, मतलब 16 days में. 3/4 in 12 days, तो 16 days में complete. Now we need to take the total work as the LCM of these numbers 18, 24 and 16. ठीक है, तो मैं अगर कैसे करूँ, 72 ले लूँ क्या? नहीं लेंगे, 72 नहीं लेंगे, 144 ले लो. चलो 144 and 144. 144 से that means they effectively 8 units per day, 9 units per day, and 24 से करोगे तो 120 आ गया, 6 units per day. So x y z कितना कितना units करते हैं in a day we have calculated. Now we can apply this in the question. Total work has to be 144. All of them work together for n days and then x and z quit. So 8 plus 6 plus 9 units of work in a day for n days. Then x and z quit and y alone finish the remaining work in how many days? 8 2/3, which is 26/3. 24 plus 2, 26/3, and this is equals to total work 144. What is the value of n? So this is 9 plus 15, 23. 23n 2, तो this is 144 minus 40, 52 हो जाएगा. ठीक है, 52, तो 23n is equals to 44 से 8 निकल दो, है ना, तो 94, 92. ठीक है, तो n equals to 4. n equals to 4. n equals to 4. For 4 days they were working together. किया क्या है? Let's see. For the complete unit of work done by all three into n plus for the remaining 8 2/3 days y was working alone, that has to amount for the total work. Total work we have taken as 144 units. तो ये हमारा आंसर हो गया. ओके, डन. चलो, let's try to solve these questions from 70. देखते हैं चलो क्या है. Okay, let's start with 61. ठीक है, फिर let's take it from there. 61 से 80 solve करना है ना. There has been no democracy that has grown economically without corporate capitalism. There has been no democracy that has grown economically without corporate capitalism. It has in modernizing the economy and enabling the transition from rural to urban. Okay, sorry if the audio was slow. Hello, clear? So the economy and enabling a transition from rural to urban and agriculture to industry and services, which are inevitable with growth. It generates jobs, and there is no other way to fix a country's unemployment. There is no other way to fix a country's unemployment without a further impetus to private businesses. Extreme terms में लिखा हुआ है. Big companies can operate on a large scale and become competitive both domestically and externally. A vibrant corporate capitalism base also leads to additional revenue for the state, which in turn can be used for greater welfare of the marginalized and creating more level playing fields in terms of opportunities. ठीक है. Now, the options. Which of the following is the best message conveyed? Corporate capitalism is important for the economic growth of a state and also for democracy. Right? क्योंकि in the passage they have seen कि इसके बिना ये हो ही नहीं पा रहा है. Right? Extreme terms में the passage is written. Corporate capitalism is imperative for a modern state to achieve its political objective. Political objective की कोई बात नहीं है. No state can ensure its economic survival for long without. No, this is extreme. Corporate capitalism and democracy have mutual dependence for their continued existence. Continued existence के लिए corporate governance is important economic growth of a state and also for democracy. Important है, but mutual dependence for survival ये ज़्यादा extreme है. ठीक है, तो I will choose rather an option which is more moderate, which is A. With reference to the following passage, the following assumptions have been made. Corporate capitalism promotes the growth of labor force and provides more employment opportunity. Yes. Poor and marginalized section of the population are benefited by corporate wealth by trickle down. अब trickle down effect if it they take के हाँ tax base बढ़ रहा है जो इसमें बोला है, which in turn can be greater welfare for marginalized and creating a more level playing field for newer opportunities. तो yes, we can take it, है ना.
अगर वो डायरेक्टली ट्रिकल डाउन इफेक्ट के डेफिनेशन पे चला गया देन इट कैन चेंज, बट मोस्टली ओवरऑल जो वी नो on based on that we can select option C. A network of voluntary associations stands as a buffer between the relatively powerless individuals and the potential powerful state. It takes individual out of the state of isolation and gives them a chance to participate in the common endeavor. This is basic thing that is given in different words. Same चीज है but different words में लिखी हुई है. Okay, society में होता क्या है, यही होता है. Okay, this was simple. Reading comprehension relatively easy है, assumption के questions are good. Right, चलो next. There exists a natural number which when increased by 50% can have its number of factors unchanged. Number of factors unchanged. Natural number 1 को 50% से 1.5 हो गया, तो 2 को increase करोगे, 2 को increase करोगे, sorry, 2 को if you increase by 50% तो you will get 3. Number of factors 2 correct है. There exists a natural number which when increased by 150% can have its number of factors unchanged. 150 से 2 को increase करोगे तो 2 को increase करोगे 150% से 2.5 हो जाएगा, तो 2 से increase करोगे तो 5 हो गया. Number of factors इसका भी 2 है, इसके भी 2 है, तो this is also correct. Both first ही चीज से can भी बोल रहा है ना, the possibility exists a natural number, there exists a natural number, yes there exists a natural number which when increased by 50 number of factors doesn't change, 2 and 2, and दूसरे में भी 2 and 2. okay, चलो डायरेक्शन का क्वेश्चन है. डायरेक्शन हर साल आ रहा है, इस साल भी आया था. तो देखो ए बी और ये सब कनेक्टेड है, ए बी सी डी डी. ए इज 6 किलोमीटर साउथ ऑफ बी, 6 kilometers south of B. A is 10 kilometer west of C. 10 kilometer west of C. D is 5 kilometer east of E. C is 6 kilometer north of D. C is 6 kilometers north of D. And क्या था? D is 5 kilometer east of E. D is 5 kilometer east of E. C is 6 kilometers. F is 9 kilometer west of B. F is 9 kilometer west of B. F is 12 kilometers north of G. F is 12 kilometers north of G. Now G and E की एक रोड है क्या? G and E की एक रोड है, तो this are also connected. The person goes from D to F through this road. Which of the distance covered, shortest distance नहीं पूछा, distance covered by this. तो either if it goes from D to E 5, ठीक है, this total has to be 19, तो this is 14. So 19 plus 12 is 31. अगर ऊपर जाएगा 6, 16, 22 और 9, 31. तो again the distance they have to travel is 31 kilometers. इसमें अगर वो सही बनाओगे, क्या बोलते हो, पैटर्न, सॉरी डायग्राम, तो you will get the correct answer. 4 cube is coded as 7 cube. 6 cube is coded as 9 cube. So 8 cube will be coded as 11 cube. 11 cube is nothing but 1331. यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो. 1 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट विल बी 1. यही पॉसिबल है. कितना सिंपल इस बार सीरीज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस वर वेरी इजी. रीजनिंग वाज वेरी 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 इजी. उससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता रीजनिंग. ओके, नाउ व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6? All these numbers are divisible by 3. All these numbers are divisible by 3. Odd. Odd plus odd is even. Odd plus odd is even. There are even number of terms. So sum of these is even. And all divisible by 3. So all divisible sum. So sum divisible by 2 and 3. So if this whole thing is divisible by 6, that means the remainder is 0. कैसे divisible है? Every term is divisible by 3. 3 कॉमन ले सकते हो हर में से.
Remaining thing will be odd numbers. Odd numbers added for 98 times. Any two odd numbers leads to even number. तो even number में odd numbers होंगे, मतलब अगर suppose 1 plus 1 है 2, 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4 बार 1 है, again 4 plus 1 6. जितने बार even terms होंगे तो you will find odd terms even number of times होंगे, तो the sum will be even. So this number is divisible by 2 also. The remainder is 0. If the complete sum is divisible by both the numbers 2 and 3, it is divisible by 6. So remainder is 0. सिंपल क्वेश्चन, कुछ सोचना ही नहीं था. कोई क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. So what is the smallest one digit number having exactly 4 distinct factors? So 1 का कितना है, 1, 2 का 1 and 2, 3 का 1 and 3, 4 का 1, 2 and 4, 4 distinct factor. 5 का नहीं, 6 का. 6 के number of factors are 1, 2, 3 and 6. What is the smallest one digit number having exactly 4 distinct factors? 6. इसकी जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, इसकी जरूरत पड़ी नहीं पड़ी. Still we can answer what is the smallest digit number. पहली बार in the paper they give an option like this. The question can be answered even without using any of these statements. Option D. The answer to question number 68 is option D. The question can be answered without using the information in any of these statements. Understood? ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 60. How is Q related to P? P has two sisters. P has two sisters, R and S. And R's father is brother of Q. R's father is brother of Q. You have to find Q and P में relation. तो individually तो हो नहीं सकता, मैच करना पड़ेगा. So यहाँ पे there is some person जिसका R's father is this and he is the brother of this. तो ये relationship आप बना सकते हो. What is the relationship between Q and P? You don't know the gender. You don't know the gender. The question cannot be answered even using any of these statements. You don't know the gender. तो gender नहीं पता है तो you can't answer this question. ये gender पता है क्या? नहीं पता, तो Q और P में relation बता पाओगे? नहीं बता पाओगे. Let P, Q, R, S be distinct non-zero digits. If P plus P, PP into PQ is equals to this, where P is less than 3. P is less than 3 का P की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2 and 3. Q की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3 and 4. ओके, सो 1, 1 ले लेंगे तो P को अगर मैं 1 ले लूँ तो दिस इज P को if I take 1, P is equals to 1. So this will be 11 into 1. ठीक है, 4 डिजिट नंबर होना चाहिए आर एस एस. तो 11 इंटू 11 कर लो, 11 इंटू 12 कर लो, 11 इंटू 13 कर लो, 11 इंटू 14 कर लो. 4 डिजिट नंबर तो नहीं मिलेगा. 11 इंटू 14 कितना होता है? 140, 154 होता है. 4 डिजिट नंबर है नहीं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल. P इज इक्वल्स टू 2. P इज इक्वल्स टू 2 में मैक्सिमम वैल्यू कैन बी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी, देखिए इसमें मैक्सिमम पता कर दिया मैंने. तो दिस इज मैक्सिमम इज 154. यहाँ पे भी 22 इंटू 24 कर दो मैक्सिमम. ठीक है, तो 22 इंटू 4 इज 80, 8 कैरी ओवर, 20 44, 44 8 इज 5. मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है. तो P की ओनली वैल्यू पॉसिबल इज 3. P की ओनली वैल्यू पॉसिबल इज 3. 3 इंटू 3. अब दिस हैज टू बी आर आर एस एस, फर्स्ट 2 डिजिट्स नीड टू बी सेम. तो इसमें जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे देन ओनली यू विल गेट दिस. 33 का 1122 आएगा ये शायद तक. 34 इंटू 33 कर लो यार, फटाफट करो. 2 1 9 10 3 वापस से 102. तो दिस इज 1122. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस इज 1122. आपको कोई भी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी क्या? मैंने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट यूज नहीं किया. द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दी स्टेटमेंट्स. अगेन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P हैज टू बी 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q हैज टू बी 4. R equals to 1, S equals to 2. Without doing anything I can tell you this. Okay, ठीक है. So the answer to this question is done. Next, let's finish half an hour में. Let's finish this paper now. If you see, the first half was more difficult. Second half में the questions are on the easier side.
तो पेपर में भी when you are doing right first hour में you don't have to go one by one, you have to see if the paper is easier बाद में. तो पहले जो question easy लगते हैं which you find कि I know the solution to these questions, first attempt those, then move to the next types of questions. Don't keep switching. ऐसे कोई भी strategy के बिना नहीं जाना चाहिए पेपर में. You need to have a strategy that I will solve the paper like this. I will first try to solve reasoning, चलो reasoning के easy questions, quant के easy questions, reading comprehension के easy questions. I have tried to tell you the strategy in the last videos when we discuss paper from 21, 22, 23 and 24. ठीक है, यहाँ 25 में because the paper is new, everyone will be expecting कि just sir number ये question का solution बता दो. तो इसीलिए I am going number wise के 1 to लेके 80 तक. Understood? चलो let's start with the next question. क्या है ये? Next passage. A single number for inflation is an aggregate across different commodities and services. The price rise different for different items of consumption. So the single number is arrived at by assigning weights, weighted average पढ़ा होगा, तो assigning weights to different commodities and services. For WPI the weights in productions are used. For CPI the consumption basket is used. दोनों में definition क्या क्या है? But people are not homogeneous. The consumption basket is vastly different for the poor, the middle class and the rest. Hence CPI is different for each of these classes and a composite index require averaging the baskets. Okay. Which of the following statement best reflect crucial message? We must use WPI exclusively and measure price rise and CPI should be done away with. No such thing is said. The present calculation of inflation rate does not correctly measure price rise of individual item commodity. Inflation data under present services is inflation data under present services in the consumption basket services का कोई लेन देन. Knowledge of inflation rate is not really of any use to anybody. Extreme. The present calculation of inflation rate does not correctly measure price rise of individual items or commodity. ठीक है, क्योंकि weighted average है, average out कर दे तो इसलिए. तो ऑप्शन बी 71 का द आंसर हैज टू बी बी. अलग ही पैसेज है, देखो पैसेज ही चेंज कर दिया. ठीक है, तो चलो पैसेज कर लेते हैं. Trust stands commonly defined as being vulnerable to others. Entrepreneurship implies trust in others and willingness to expose oneself to betrayal. Trust in expert system is the essence of globalizing behavior. Trust itself emerges as a super commodity in the social market and defies the characteristics of goods and services in a global market. Trusting conducts only means holding others in good esteem and an optimism that they are or will be competent in certain respects. Basically philosophical passage है, कुछ ना कुछ एक लाइन आपको ढूंढनी है, which of the following statement is the crux, main central idea. Trustworthiness cannot be expect नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है? No. Trustworthy people are the most vulnerable people. Most vulnerable होते हैं ये. We can't comment. Trust is important though it entails risk. ठीक है, it is important but इसके साथ risk भी है. You are exposing yourself to others, उनके behaviors को. No economic activity is possible without. No economic word is possible. Extreme हटा दो. Option D. 72 का correct option is option D. Okay, चलो next. In a football match, team P playing against Q was behind 3 goals with 10 minutes to go. ठीक है, does team win match? So the team P scored 4 goals in the last 10 minutes. देखो स्टेटमेंट 1 से अगर मैं करूं तो इनिशियली व्हाट वाज द स्कोर? Q was ahead in the P was playing against Q and was behind by 3 goals. तो कैसे कैसे हो सकता है? P and Q के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें? यहां से अगर P was from this, I can write P and Q. तो हो सकता है 0-3, 1-4, 2-5, 3-6 and so on. Team P scored 4 goals in the last 10 minutes. तो 4 goals से क्या क्या स्कोर हो जाएगा? 4-3. ठीक है, बट इसमें Q की कोई बात है कि Q ने कितने स्कोर किए? नहीं. तो हम बता पाएंगे P जीता कि नहीं जीता? नहीं. टीम Q स्कोर्ड अ टोटल और 4 गोल्स इन द मैच. तो 4 गोल्स में इसमें P के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो P नहीं बता पाएंगे P जीता कि नहीं जीता. इफ वी कंबाइन बोथ ऑफ दीज, दैट P scored 4 goals in the last 10 minutes and Q scored a total of 4 in the match. ठीक है,
तो द पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोर इज 4 ठीक है, और पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोर इज, अगर 1-4 था तो पॉसिबिलिटी ऑफ स्कोर इज 5-4 ऑल्सो, 4-4 हो गया, और अगर P स्कोर्ड 4 गोल्स इन द लास्ट तो 4-5 ऑल्सो, तो ड्रॉ भी हो सकता है और जीत भी सकता है. तो इवन बाय यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट्स टुगेदर यू कांट आंसर दिस, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट्स, क्योंकि इसमें से ये तो हो नहीं सकता, क्यू ने सिर्फ दोनों को जब कंबाइन करोगे तो ये सारे ऑप्शंस तो गए. क्यू जब 4 करेगा तो इसने भी 4 किए लास्ट में, तो 4-4 हो गया. 4 थे, इसने 4 लास्ट में स्कोर किए, 5-4 हो गया. There are two possibilities, so we can't answer this question by using either of these both these statements together. Okay, what is this? P plus Q का whole square minus 4Q, so this is P square plus Q square plus 2Q PQ minus 4PQ, which is nothing but P minus Q का whole square, and where P and Q are natural numbers is positive, तो पूछ रहा है is this greater than 0, is this greater than 0, तो P लेस देन Q पे भी होगा, P ग्रेटर देन 0 पे भी होगा. ठीक है, P और Q सेम नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी. अगर इंडिविजुअल इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन. नहीं, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन. कोई भी एक स्टेटमेंट यूज करके आप बता सकते हो इज इट पॉजिटिव और नॉट. P लेस देन Q है तब भी ये स्क्वायर में है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, तब भी पॉजिटिव है. P ग्रेटर देन Q है तो ये पॉजिटिव आएगा, तो स्क्वायर पॉजिटिव है. अंडरस्टूड. क्वेश्चन बाय कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ईदर ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन. चलो, 74 इज डन. In a T20 match, the 3 players X, Y, Z scored a total of this. So X plus Y plus Z equals to 37. The ratio of the numbers of scored by X to the number of scored Y is equal to the ratio of X stored with respect to Y is equal to the number ratio of Y to the score of Z. Okay, ये equation है. There are two variables. Value of run this. तो इसका आंसर क्या होगा? We have 3 variables and we have only 2 equations. We have 3 variables, 2 equations. So can you solve it? No, cannot be done due to insufficient data. ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है. मतलब 2 equation 2 variable होंगे, we can solve. 3 equation 3 variable होंगे, we can solve. Here you have 2 equations and 2 equations and 3 variables. You can't solve it. और कुछ तो नहीं दिया है? कुछ नहीं दिया. या तो ये रेशियो इक्वल टू कुछ दे दो, तब 3 इक्वेशन बन जाएगी, तब मैं सॉल्व कर सकता हूँ. अभी नहीं कर सकता. ओके, चलो नेक्स्ट 76. P plus Q equals to 10 where P and Q are integers. Maximum value of P and Q when P and Q are positive integers. P and Q positive integers है, maximum value होगी 5 into 5 25. Maximum value of P and Q when P is greater than equal to -6 and Q is greater than equal to -4. तो यार ये तो क्या क्वेश्चन है, क्यों पूछा है? यहाँ पे भी मैं P equals to 5 और Q equals to 5 डाल सकता हूँ ना. ये भी 25 हो जाएगा. मैक्सिमम वैल्यू 25, वैल्यू 1 and 2 आर इक्वल, तो ऑप्शन सी. कैसे डिफरेंस है ये? कुछ होगा नहीं. कंसिडर अ सेट ऑफ 11 नंबर्स. कितना? 11 नंबर्स. मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ सेट व्हेन दे आर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 -5. सो अगर मैं 11 इंटीजर्स है, मैं ये ले लेता हूँ -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5. मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एवरेज इज 0. Minimum value of the product of the numbers of the set when they are consecutive non-negative integers. तो non-negative integers कर लोगे तो क्या करोगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Sorry, कितने लेने हैं? हाँ. So when you product of this, it is again 0. 0 0 आ सकता है. मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आ गई, तो वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू 2. अगेन सी, ऑप्शन सी. ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस थे ये वाले, क्वांटिटी कंपैरिजंस. द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स P Q R is K. P is
as much more than the average as Q is less than the average, what is the value of R? So देखो P average, suppose let average be A, let average be A, the average of three numbers P Q R is K, मतलब एवरेज K ही दिया हुआ है, तो P प्लस Q प्लस R बाय 3 इज इक्वल्स टू K, ठीक है, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल्स टू 3K. P इज एज मच मोर देन द एवरेज, K से कुछ ज्यादा है. सपोज क्वांटिटी Q कर लेते, X कर लेते हैं, एवरेज से कितना ज्यादा है P, X, तो K एवरेज है प्लस X, ठीक है, एंड Q इज लेस देन द एवरेज, जितना P ज्यादा है उतना ही Q कम है, तो इसको मैं लिख देता हूँ K माइनस X और यहाँ पे R लिखे रहने देता हूँ और ये 3K है. सो यहाँ X और माइनस X कैंसिल हो जाएगा, तो 2K प्लस R इक्वल्स टू 3K, तो R इक्वल्स टू K. जो दिया है वो बोलता गया और मेरा सॉल्यूशन आ गया. 78 का कौन सा आंसर है? ऑप्शन ए. इजी क्वेश्चन. बाद में सेकंड हाफ ऑफ द पेपर इज वेरी इजी. X is a real number between 0 and 1. Which of the following statement is are correct? पूछा है कि कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है. तो देखो 1/2 ले लूँ तो 1/2 का स्क्वायर इज 1/4. X इक्वल्स टू 1/2 ले लिया तो 1/4 इज ग्रेटर देन 1/8. ठीक है, 1/3 लूंगा तो 1/9 इज ग्रेटर देन 1/27. करेक्ट, तो दिस इज करेक्ट. ठीक है, अभी 0 से 1 में लेना है तो 0.3 ले लें या 0.03 ले लें. चलो 0.09 ले लेते हैं. ठीक है, x इक्वल्स टू 0.09. तो इसका मतलब होगा 0.09 इज ग्रेटर देन रूट ऑफ 0.09. 0.09 क्या होता है? 0.3 इंटू 0.3. 0.3 इंटू 0.3 इज 0.09. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 0.09 इज ग्रेटर देन 0.3 विच इज इनकरेक्ट. सो दिस इज इनकरेक्ट. सो 1 ओनली. कोई भी कंस्ट्रेंट में रह के, कंस्ट्रेंट इज x शुड बी 0 एंड 1 के बीच में, तो आई एम टेकिंग सम वैल्यू ऑफ x बिटवीन 0 एंड 1 फॉर विच आई एम ट्राइंग टू प्रूव दिस रॉन्ग. ये फर्स्ट वाला इज ऑलवेज ट्रू. जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करते रहते हो वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, वो वैल्यू कम होती रहती है. तो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकेंड वन इज इनकरेक्ट. नहीं, लास्ट क्वेश्चन. आई एम ऑल्सो टायर्ड, यू मस्ट बी ऑल्सो टायर्ड सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन वी डन विद दिस सीरीज. मोस्ट प्रॉब्ली विल कम विथ मोर वीडियोज फॉर यू इन CSAT. जैसे जैसे प्री आएगी वी विल कम विथ मोर वीडियोज. I'll try to make concept video also, so that जैसे time and work में today I told you how to solve these questions with LCM method. I need to tell you कि कैसे solve होता है ना. If you don't know, if you know, well and good. नहीं तो you can watch those videos and then you can understand how to apply those things, right? The difference between two natural number is 10. What can be said about the natural number which are divisible by 5 and lie between these two numbers? ठीक है, suppose the two numbers for which the difference is 10 can be 10 and 20. So between these how many numbers are there? 15 is a number which is divisible by 5. Suppose I take from 9 to 19. The difference is 10. I can take two numbers 10 and 15 which are divisible by 5. There is only one such number. There are only two such numbers. There can be more than one such numbers. तो देखो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये individually correct नहीं है. There can be more than one such number. There can be more than one such number. एक तो हमेशा होगा ही होगा. If you take suppose 13 ले लो and 23 ले लो, you will find that 15 आएगा, 20 आएगा. ठीक है, whenever you take suppose 30 and 40, तो you will find only 35. So क्या हो रहा है? 1 या 2 हो रहा है, तो there can be more than one. This is the correct statement. तो answer to this question is option C. ठीक है, so we have done all the possible PYQs जो हमने था. PYQs from PYQs discussion of 2021, 2022, 2023, 2024 and 2025 we have done. These two were good level of papers, है ना. 2026 I hope is on the easier side, similar to 2024, so that you can easily qualify CSAT, and then your selection is based on GS only. But you need to be prepared for every eventuality, right? हर चीज़ के लिए you need to be ready. अगर difficult paper आ रहा है तो you need to understand कि what questions you need to leave
एंड देन हाउ टू गेट टू दिस मार्क 66. पहले तो है ना, एक चीज़ गलत बोलना बंद कर दो, द क्वालिफाइंग marks for CSAT is not 66.66, it is 66. Okay, so you need to get to a situation where you get how many marks? 66 marks and you qualify for CSAT. Understood? All the best. Okay, all the best. I'll be back with more videos, more series on CSAT. I hope these videos are helpful and you will make best use of it. Until the next time we will have a good time, keep studying. ठीक है, if there are any doubts, right, ऐसे टेलीग्राम चैनल का भी इसमें लिंक नहीं है, नहीं तो यू विल फाइंड टेलीग्राम पे माय चैनल. अगर वहाँ पे कोई भी डाउट्स है यू कैन पोस्ट दोज डाउट्स देयर, रीजनिंग, क्वांट, आरसी, जो भी है, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू as much as possible. Okay, have a great time. Bye bye. Thank you very much. Bye.